Hello everyone, very good morning to all of you and once again welcome to Gate Wallah. Good morning everyone, good morning. Am I audible, visible? जल्दी से मुझे बता दीजिए, am I audible, visible? चैट बॉक्स में बता दीजिए जल्दी से. Good morning everyone, good morning Manish, good morning Vaibhav, Himanshu, good morning, good morning. Am I audible, visible? Good morning everyone, good morning. जल्दी से बता दीजिएगा so that we will start the session. जल्दी से मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए so that कि स्टार्ट कर पाए क्वेश्चन. सर साइफन का प्रॉब्लम करवा दो. ठीक है ठीक है ठीक है. ओके देवज्योति, ओके श्योर. ओके 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 ओके. सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन. सो आपके पास ये अभ्यास जो बैच है ना, जो अभ्यास सीरीज आपके पास है, ये अभ्यास सीरीज का आपके पास शेड्यूल है. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो शेड्यूल का. तो आपके पास 9 AM टू 12 PM आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स रहने वाला है. उसके बाद आपके पास 1 PM टू 4 PM सॉलिड मैकेनिक्स का अभ्यास चलेगा. उसके बाद आपके पास 5 PM टू 8 PM आपके पास थर्मोडायनेमिक्स का अभ्यास चलेगा. और उसके बाद आपके पास 9 टू 12 आपके पास चलने वाला है मैथमेटिक्स का अभ्यास. राइट. सो ये आपके पास कंप्लीट शेड्यूल है अभ्यास का बैच का. ठीक है, अभ्यास सीरीज का ये आपके पास कंप्लीट शेड्यूल है. राइट. बाकी कंप्लीट टीम से आप अच्छी तरह से परिचित हो ही. चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज द एनएटी क्वेश्चन. ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एनएटी क्वेश्चन है. सो देखेंगे. सबसे पहले ना क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो. क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़िए. क्वेश्चन में क्या निकालने बोला हुआ है और क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे. नो, इट इज नॉट अ पीवाईक्यू. पीवाईक्यू जो करवाना था, पीवाईक्यू आपके पास हो गया है. ये आपके पास क्वेश्चंस है जो आपके पास न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चंस है. राइट, नए क्वेश्चंस है आपके पास. तो ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए है. देखिए भाई, क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को. क्वेश्चन में बोला हुआ है, अ 2 kg डिस्क इज कंस्ट्रेन्ड हॉरिजॉन्टली बट इज फ्री टू मूव वर्टिकली. द डिस्क इज struck from below by a vertical jet of water. The speed and diameter of the water jet are 10 meter per second and 25 mm at the nozzle exit. The height to which disk will rise and remain stationary is. Right. So ये आपके पास क्वेश्चन है. तो सबसे पहले अगर आप यहां पे देखोगे, ठीक है, डेटा नोट कर लीजिए. डेटा आपके पास क्या क्या गिवन है, डेटा आप नोट कर लीजिए. डेटा नोट कर लेंगे. डेटा आपके पास क्या क्या गिवन है. ओके. सो सबसे पहले यहां पे अगर आप देखोगे तो 2 kg का आपके पास डिस्क है ना. ये आपके पास इस तरीके से, दिस इज द डिस्क. चलो भाई, ऐसा कुछ आपके पास एक डिस्क है. ये आपके पास डिस्क है और ये जो डिस्क है, दिस डिस्क इज सपोर्टेड बाय इंपैक्ट ऑफ वाटर जेट. और ये जो वाटर जेट है, ये वाटर जेट कहां से निकल रहा है, तो ये जो वाटर जेट है ये निकल रहा है आपके पास एक नोजल से, है ना. एक नोजल से आपके पास निकल रहा है. तो दिस इज द नोजल. ये आपके पास है नोजल. चलो, ये आपके पास कुछ इस तरीके से आपके पास नोजल है. ठीक है. वाटर जो है आपके पास इस नोजल से निकल रहा है. ठीक है, यहां से निकल रहा है. प्लेट को स्ट्राइक करेगा
और प्लेट को स्ट्राइक करने के बाद इट इज डिफ्लेक्टेड लाइक दिस। इस तरीके से आपके पास क्या हो जा रहा है, डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। सिमिलरली इधर भी डिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। कुछ इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, कुछ इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, अब यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। 2 kg डिस्क, मतलब आपके पास यहां पे जो मास है, मास आपके पास डिस्क का ये आपके पास गिवन है, दैट इज 2 kg। मास गिवन है 2 kg, ये भी ठीक है। फिर आपके पास बोलता है भाई इट इज फ्री टू मूव वर्टिकली, राइट, मतलब हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंड है बट इट इज फ्री टू मूव वर्टिकली। द डिस्क इज स्ट्रक फ्रॉम बिलो बाय अ वर्टिकल जेट ऑफ वाटर, जैसा आपको डायग्राम में बनाया हुआ है। द स्पीड एंड द डायमीटर ऑफ द वाटर जेट, स्पीड और डायमीटर ऑफ द वाटर जेट एट द एग्जिट ऑफ द नोजल। सो दिस इज द एग्जिट ऑफ द नोजल। यहां पे आपको गिवन है वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी आपके पास गिवन है दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं डायमीटर की बात करूं जेट का, तो ये गिवन है 25 mm, ये आपके पास गिवन है 25 mm, ये आपके पास गिवन है 25 mm। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि भाई एट, राइट, क्वेश्चन में बोला हुआ है द हाइट टू विच द डिस्क विल राइज, मतलब ये हाइट हमको फाइंड आउट करना है, राइट, ये हाइट हमको क्या करना है, ये हाइट हमको फाइंड आउट करना है, ये हाइट हमको क्या करना है भाई, ये हाइट हमको फाइंड आउट करना है। दिस इज द एच, ये एच हमको फाइंड आउट करना है। गेटिंग माय पॉइंट। सो ये आपके पास मोमेंटम इक्वेशन का आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास मोमेंटम इक्वेशन का आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। और मोमेंटम इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए वी आर यूजिंग द कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच। तो सबसे पहले तो ये बताइए, अगर मैं कंट्रोल वॉल्यूम मानूं तो मैं किसको मानूंगा कंट्रोल वॉल्यूम अपना, ठीक है। ये जो आपके पास डिस्क है, दिस इज माय कंट्रोल वॉल्यूम, है ना, ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है, दिस इज अ कंट्रोल वॉल्यूम। और अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, देखो क्या हो रहा है, ये आपके पास जो प्लेट है ना, ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। एक कंडीशन ऐसे आ जाएगी, स्टेडी स्टेट कंडीशन आप बोल सकते हो, आप इक्विलिब्रियम स्टेट बोल सकते हो। उसके बाद फर्दर मूवमेंट नहीं होगा इस प्लेट का, फर्दर मूवमेंट नहीं होगा इस प्लेट का, एक कंडीशन आपके पास ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और उसी कंडीशन पे, मतलब वही स्टेडी स्टेट कंडीशन पे, वही इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आपको एच पूछा हुआ है। तो आप मुझे बताइए, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन की मैं बात करूं, इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करूं, तो आप अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, अगर इस प्लेट का फ्री बॉडी डायग्राम या ये इस डिस्क का फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाएंगे, तो कौन कौन से फोर्सेज एक्ट करने वाले हैं, कौन कौन से फोर्सेज एक्ट करने वाले, एक आपके पास इसका जो वेट होगा, डिस्क का जो वेट होगा, ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा। सो दिस इज W इज इक्वल टू M इंटू जी। और दूसरा जो आपके पास फोर्स एक्ट करने वाला है, वो एक्ट करने वाला है जो आपके पास, राइट, जेट जो फोर्स लगाएगा, जेट जो इस डिस्क पे जो फोर्स लगाएगा, वो फोर्स आपके पास किधर एक्ट करने वाला है, ये आपके पास ऊपर की तरफ। लो लेट अस अज्यूम दिस इज अ Fy डैश। इज इट क्लियर, राइट भाई। ये जो आपके पास वाटर जेट है, ये वाटर जो डिस्क पे फोर्स लगाएगा, वो डिस्क पे जो फोर्स लगाएगा, व्हाट इज दैट, दैट इज अ Fy डैश। ठीक, चलिए अब यहां से अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन, क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम हाइट ही पूछा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, क्या बोला हुआ है, टू विच द डिस्क विल राइज एंड रिमेन द स्टेशनरी। अरे भैया, रिमेन द स्टेशनरी मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही तो आपके पास ये स्टेशनरी रहेगा, राइट। मतलब अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन की अगर मैं बात करूं, एट इक्विलिब्रियम, सो मैं बोल सकता हूं दिस W इज इक्वल टू दिस इज द Fy डैश। आप बताइए व्हाट इज द Fy डैश, राइट। मोमेंटम इक्वेशन का एप्लीकेशन सबने पढ़ा हुआ है। सो अगर मैं Fy डैश की बात करूं, Fy डैश, तो मैं लिख सकता हूं क्या, दिस Fy डैश इज नथिंग बट द फोर्स ऑन द डिस्क। व्हाट इज द Fy डैश, दिस इज द फोर्स ऑन द डिस्क विच इज एक्सर्टेड बाय द वाटर जेट, राइट। सो Fy डैश अगर मैं लिखूं तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं दिस इज द इनिशियल मोमेंटम रेट ऑफ द जेट इन वाई डायरेक्शन माइनस दिस इज द फाइनल मोमेंटम रेट ऑफ द जेट इन वाई डायरेक्शन, ठीक। और दिस इज इक्वल टू, क्या मैं डायरेक्टली यहां से लिख लूं, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं भाई, देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, राइट। ये हो जाएगा आपके पास रो इंटू, ये हो जाएगा आपके पास रो इंटू दिस इज A नॉट इंटू V नॉट इंटू V1। अच्छा, अगर मैं बोलूं आपके पास ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है, इस कंट्रोल वॉल्यूम का इनलेट, यहां पे आपके पास इनलेट है कंट्रोल वॉल्यूम का इनलेट, दिस इज द 1। कंट्रोल वॉल्यूम का एग्जिट इस साइड पे आपके पास है 2 और इस साइड पे आपके पास है 3, राइट। कंट्रोल वॉल्यूम का इनलेट जो है, कंट्रोल वॉल्यूम का इनलेट, दिस इज द इनलेट 1,
इस साइड पे आपके पास एक्स डायरेक्शन में जेट बाहर निकल रहा है, सो दिस इज द एग्जिट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम एंड दिस इज द एग्जिट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम 3। गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां से अगर देखोगे तो ये आ जाएगा रो ए नॉट वी नॉट इंटू वी वन। अब यार देखो ये कैसे आया क्या आया ये अभी बताने का टाइम नहीं है ना, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। चलिए अब यहां से अगर देखोगे तो अब मुझे आप बताओ क्या मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल टू एफ वाई डैश है, सो ये हो जाएगा रो इंटू ए नॉट इंटू वी वन इज इक्वल टू W। व्हाट इज द W? W इज M इंटू जी। मास आपको गिवन है दोस्त 2 इंटू जी की वैल्यू आपको गिवन है क्या? जी की वैल्यू नहीं गिवन है तो आप ले लेंगे 9.81, ये हो जाएगा 9.81। चलो यहां से ये हो गया आपके पास, देखो भाई ये हो गया रो ए नॉट वी वन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 9.81, दिस इज 9.81। चलिए वाटर है ये हो गया 1000 इंटू दिस इज पाई बाई 4 इंटू व्हाट इज अ डी नॉट। देखो क्या दिया हुआ है डी नॉट, डी नॉट है आपके पास 25 mm, सो दिस इज 0.025 पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू व्हाट इज वी नॉट। वी नॉट आपके पास कितना है, देखो यहाँ पे वी नॉट आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। वी वन हमारे लिए अननोन है एंड दिस इज 2 इंटू 9.81। फटाफट आंसर करके मुझे बता देंगे व्हाट इज अ वी वन। यहां से मुझे आप वी वन बता देंगे कितना आ रहा है वी वन, क्या मुझे फटाफट आंसर करके बता देंगे व्हाट इज द वी वन यू आर गेटिंग। वी वन कितना आ रहा है मुझे बता देना। और अगर आपको वी वन पता चल गया, अगर आपको वी वन पता चल गया तो अब यहां से देखो, अगर वी वन आपको पता चल गया तो कैन वी अप्लाई द बर्नौली इक्वेशन बिटवीन नॉट एंड वन। कैन वी अप्लाई द बर्नौली इक्वेशन बिटवीन नॉट एंड वन? नॉट एंड वन, यस वी कैन अप्लाई द बर्नौली इक्वेशन बिटवीन नॉट एंड वन। सो बर्नौली इक्वेशन बिटवीन नॉट एंड वन, सो नॉट और वन के बीच में अगर आप बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे तो ये हो गया पी नॉट बाई रो जी प्लस ये हो गया वी नॉट स्क्वायर बाई 2g प्लस ये हो गया जेड नॉट इज इक्वल टू दिस इज पी वन बाई रो जी प्लस वी वन स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड वन, ये हो गया राइट। अच्छा अब यहाँ पे देखो पी नॉट और पी वन, अच्छा पी नॉट पे भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पी वन पे भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो पी नॉट और पी वन आपके पास क्या हो गया भाई, पी नॉट और पी वन सेम है, पी नॉट पी वन सेम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वी नॉट है ना, अच्छा डेटम देख लो पहले तो, डेटम किसको ले लूं, डेटम क्या डेटम मैं इसको ले लूं, ठीक है चलिए इसको मैं डेटम ले लिया। तो अगर मैं इसको डेटम ले लिया तो व्हाट इज माय जेड नॉट, जेड नॉट इज जीरो, जेड नॉट क्या हो जाएगा, जेड नॉट हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो राइट। चलो तो यहां से अगर आप देखेंगे मुझे अल्टीमेटली निकालना क्या है, एच निकालना है, तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर है ना, ये इधर आ गया डिवाइडेड बाय ये हो गया 2g इज इक्वल टू नाउ व्हाट इज z1। सो z1 यहां से अगर आप देखोगे तो आपके पास डेटम के ऊपर क्या प्लस, डेटम के ऊपर प्लस और ये हो गया आपके पास h। फटाफट दोस्त यहां से ना h निकाल लो। सो h इज इक्वल टू v1 कितना आया था, व्हाट इज द v1, v1 4 मीटर पर सेकेंड, v1 कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड आया है क्या, v1 कितना आया था 4 मीटर पर सेकेंड आया था क्या, चेक कर लेना है ना, चेक कर लेना। सो वी नॉट आपके पास है, दिस इज वी नॉट आपके पास है दैट इज 10, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस ये हो गया आपके पास 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज 2 इंटू 9.81, 2 इंटू 9.81। सो टेल मी व्हाट इज द एच, टेल मी व्हाट इज द एच, एच कितना आ रहा है बता देंगे फटाफट। व्हाट इज एच, 4.28 राइट, 4.283 मीटर, ये आ रहा है क्या, चेक कर लेना, ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या, चेक कर लेंगे सभी लोग। और देखो ये तो क्वाइट ऑब्वियस है यार, ये तो आपके पास क्वाइट ऑब्वियस है। देखो यहाँ पे जैसे जैसे आपके पास जेट ऊपर की तरफ जाएगा, जेट ऊपर की तरफ जाएगा राइट, देखो प्रेशर एनर्जी तो नॉट और वन पे आपके पास सेम है, लेकिन जैसे जैसे आपके पास ये जेट ऊपर की तरफ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ते जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, अगर एक फॉर्म की एनर्जी बढ़ रही है तो दूसरे फॉर्म की एनर्जी को तो कम होना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो इसीलिए आप देख रहे हो कि आपके पास जो V1 है, V1 आपके पास कितना आया, दिस इज 4.4 मीटर पर सेकेंड विच इज लेसर देन द V नॉट। आप समझ रहे हैं। और एक्चुअली अगर आप देखेंगे राइट,
एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये जो जेट होगा ना कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं बता देता हूं कैसा बनेगा। ये तो खैर हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरीके से बना दिया है, बट एक्चुअली जो जेट आपका होगा कैसा होगा, जेट इस तरीके से जेट होगा। द जेट इज डाइवर्जिंग, जेट इज डाइवर्जिंग। व्हाई इट इज डाइवर्जिंग यार? जेट एक्चुअल में आप देखोगे तो जेट ऐसा रहेगा, डाइवर्जिंग, इट इज डाइवर्जिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाई इट इज डाइवर्जिंग? Why it is diverging? Can anyone tell me why it is diverging? Can anyone tell me? क्योंकि देखो भाई यहां पे अगर आप देखेंगे तो देखो, अगर आप देखोगे m डॉट नॉट इज इक्वल टू यार m डॉट वन होगा ना। यहां से जितना भी मास फ्लो रेट एग्जिट हो रहा है, सेम मास फ्लो इज एंटरिंग टू द कंट्रोल वॉल्यूम। सो m डॉट नॉट इज इक्वल टू m डॉट वन। अब आप मुझे ये बताओ, ठीक है, ये हो गया आपके पास रो a नॉट और ये हो गया v नॉट इज इक्वल टू रो इंटू a1 इंटू v1। लिख सकते हैं कि नहीं? अब रो और रो तो आपके पास सेम है। अब यहां से आप साफ साफ देख रहे हो कि आपके पास मैं ये लिख सकता हूं ना, a इंटू वी इज इक्वल टू क्या हो गया, a इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। a इंटू वी इज इक्वल टू क्या है, a इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। और जैसे जैसे आपके पास इधर देखिए ऊपर की तरफ आप बढ़ रहे हो तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी रिड्यूस हो रहा है। तो भाई साहब एरिया को क्या होना पड़ेगा, एरिया को बढ़ना पड़ेगा। वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, तो एरिया को क्या होना पड़ेगा, एरिया को बढ़ना पड़ेगा। और यही चीज आप यहां पे देख रहे हो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एक्चुअली जब आप देखोगे ये जो आपके पास जेट होगा वो कैसा जेट होगा, दिस जेट इज अ डाइवर्जिंग जेट, डाइवर्जिंग बनेगा, है ना। न्यूमेरिकल सॉल्व करना था इसलिए मैंने यहाँ पे, ठीक है, आपको कांस्टेंट दिख रहा होगा, बट एक्चुअली अगर आप देखेंगे जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे एरिया क्या होता जाएगा, एरिया आपके पास डाइवर्ज होता जाएगा, एरिया जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यार काफी क्वेश्चन करवाया हुआ है अभिषेक, काफी क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। जो टॉपिक्स आपके पास है, जो टॉपिक्स आप बोल रहे हैं, सर प्लीज एक्सप्लेन V1 इन मोमेंटम इक्वेशन वंस अगेन। मोमेंटम इक्वेशन में एक्सप्लेन करूं? अच्छा चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं, बाकी ना बाकी लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, बाकी लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, मैं एक्सप्लेन करता हूं। अभिषेक क्वेश्चंस करवाए हुए यार, आप पुराने क्वेश्चंस आके देखिए, पुराने आपके पास PYQs में भी आपके पास क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। इवन वी विल ट्राई टू कवर इन द अभ्यास बैच ऑल्सो, राइट। वी विल ट्राई टू कवर द टॉपिक्स, राइट, जो कि मैकेनिकल में नहीं था, वी विल ट्राई टू कवर इन अभ्यास बैच ऑल्सो। इवन PYQs में भी हमने कवर किया हुआ है। ओके, सो बाकी लोग ये क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी लोग ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है। चलिए मैं एक बार ना मोमेंटम इक्वेशन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इधर देखो, अगर मैं मोमेंटम इक्वेशन की बात कर रहा हूं, सी भाई यहां पे मोमेंटम इक्वेशन लिखते हैं ना भाई आप, समेशन F इज इक्वल टू, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आप बताओ जिसका मोमेंटम चेंज होगा फोर्स तो उस पे आएगा ना, बिकॉज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेज, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है सेज कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी मैटर इज इक्वल टू फोर्स ऑन दैट मैटर। मतलब जिसका मोमेंटम चेंज हो रहा है फोर्स उस पे आएगा, ठीक है। यहां पे मोमेंटम चेंज किसका हो रहा है, जेट का मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो फोर्स किस में आएगा, जेट में आएगा। मतलब अगर मैं Fy की बात करता हूं तो दिस इज द फोर्स, ये फोर्स है, दिस इज द फोर्स ऑन द जेट, ये जेट में फोर्स है, और जेट में फोर्स है तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज द फाइनल मोमेंटम रेट इन एक्स वाई डायरेक्शन माइनस इनिशियल मोमेंटम रेट, ये हो गया वाई डायरेक्शन, है ना, क्योंकि वाई डायरेक्शन में ही आपके पास प्लेट में फोर्स आएगा, ये हो गया आपके पास वाई डायरेक्शन। मैं Fy निकाल रहा हूं तो Fy निकाल रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं ना इनिशियल मोमेंटम रेट इन वाई डायरेक्शन, सॉरी फाइनल मोमेंटम रेट इन वाई डायरेक्शन माइनस इनिशियल मोमेंटम रेट इन वाई डायरेक्शन। बट माई ऑब्जेक्टिव इज Fy डैश निकालना। वाई Fy डैश, बिकॉज Fy डैश दिस इज द फोर्स ऑन द डिस्क, ये फोर्स है ऑन द डिस्क, ये डिस्क में फोर्स है। तो अब आप मुझे बताओ Fy डैश और Fy में क्या रिलेशन हो जाएगा, द Fy डैश इज इक्वल टू माइनस Fy ना, यही तो लिखेंगे, ठीक है, न्यूटन का थर्ड नियम। सो Fy डैश इज इक्वल टू नाउ माइनस Fy, सो माइनस Fy, देखो Fy आपके पास ये है, माइनस सामने आएगा तो ये आपके पास हो जाएगा ना द इनिशियल मोमेंटम रेट इन वाई डायरेक्शन माइनस फाइनल मोमेंटम रेट इन वाई डायरेक्शन। सो व्हेनेवर आई से इनिशियल, व्हेनेवर आई से इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है कंट्रोल वॉल्यूम इनलेट, व्हेनेवर आई से फाइनल, फाइनल का मतलब होता है कंट्रोल वॉल्यूम एग्जिट। नो सी, अब अगर आप वाई डायरेक्शन में देखोगे, देखो यहाँ पे
वाई डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो कंट्रोल वॉल्यूम के इनलेट पे जो मोमेंटम रेट है वो क्या है, जो कंट्रोल वॉल्यूम के इनलेट पे जो मोमेंटम रेट है, दिस इज द m.1 एंड दिस इज द v1y, ये हो गया। अच्छा, फाइनल मोमेंटम रेट इन वाई डायरेक्शन। सो अगर आप देखेंगे जो फाइनल मोमेंटम रेट है दैट इज इन द एक्स डायरेक्शन, द फाइनल मोमेंटम रेट इन वाई डायरेक्शन। फाइनल मोमेंटम रेट वाई डायरेक्शन में नहीं है, राइट। जेट टकराने के बाद कैसा डिफ्लेक्ट हुआ है देखो, तो फाइनल मोमेंटम रेट वाई डायरेक्शन में होगा क्या, नहीं होगा। दैट्स व्हाई आई से द फाइनल मोमेंटम रेट इन वाई डायरेक्शन दिस इज 0। अब यहां से देख लो, सो एफ वाई डैश इज इक्वल टू, राइट, नाउ m.1। तो कैन वी राइट, भाई देखो जितना मास आपके पास नोजल से निकल रहा है, नोजल के एग्जिट से जितना मास निकल रहा है उतना ही आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम में इनलेट हो रहा है, राइट। और एक चीज और यहां पे अगर आप m.1 लिखते हो, m.1 यहां पे लिखते हो, सो यू शुड नो द एरिया एट दिस पॉइंट, एरिया एट दिस। मैंने वही चीज अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, यहां पे आपको एरिया पता होना चाहिए। जब आप लिखोगे m.1 इज इक्वल टू रो a1 v1, तो वेलोसिटी तो हमने निकाल लिया है, लेकिन हमें a1 भी पता होना चाहिए, जो कि जनरली क्वेश्चन में नहीं दिया होता। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग, क्योंकि m.1 किसके बराबर है, m.1 तो m.0 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ना रो a0 v0। सो दैट्स व्हाई व्हाट मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, देखो यहां से ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास m.1 इज इक्वल टू m.0 एंड v1y, द v1y। अब देखो कंट्रोल वॉल्यूम के इनलेट पे y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगा, v1y, एंड v1y इज इक्वल टू v1। अब देखो यहां से ये हो जाएगा रो इंटू ए नॉट इंटू ये हो गया v नॉट इंटू v1। यही तो एफ वाई डैश था। बात समझ में आ रहा है क्या, क्या बात समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, टेल मी, क्लियर है या नहीं है, बताइए जल्दी से। ओके फाइन, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए भाई, नाउ सी हियर, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, द वाटर फ्लोज थ्रू अ सर्कुलर नोजल exit sorry, the water flows through a circular nozzle exit into the air as a jet and strike a plate। तो ये जो प्लेट है ना यार, इस प्लेट को आपके पास क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द प्लेट, राइट, दैट इज 70 न्यूटन। मतलब ये जो प्लेट है, जेट जब यहां से निकल रहा है तो ये जो प्लेट है ना, इस प्लेट पे आपके पास फोर्स एक्सर्ट करेगा, राइट, और उसके कारण से जो प्लेट है, प्लेट इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा। सो उसके लिए क्या किया गया है, एक्सटर्नल फोर्स क्या किया गया है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है, जिसका कि मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, दैट एफ इज इक्वल टू दिस इज 70 न्यूटन। ये आपके पास गिवन है 70 न्यूटन। फ्रिक्शनलेस फ्लो, वन डायमेंशनल फ्लो, द मर्करी मैनोमीटर रीडिंग एच इज, आपको ये जो रीडिंग है ना, इस रीडिंग के ऊपर आपको कमेंट करना है, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो भाई, यहां पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अगर आप यहां पे देखोगे F इज इक्वल टू आपके पास है 70 न्यूटन, F इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया 70 न्यूटन, राइट। नो सी हियर, यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू, ये F किसके बराबर हो जाएगा, दिस F इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ एक्स डैश के बराबर, है ना। ये जो जेट है, ये जेट क्या करने वाला है, ये जेट आपके पास फोर्स एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर, फोर्स एक्सर्ट करेगा इस प्लेट के ऊपर। तो जो जितना फोर्स एक्सर्ट करेगा वही तो इस F के बराबर होगा। सो F इज इक्वल टू एफ एक्स डैश एंड एफ एक्स डैश इज इक्वल टू, आई एम डायरेक्टली राइटिंग ना, दिस इज रो इंटू ए इंटू v1 स्क्वायर। ये कहां से आया है, वही आपके पास जो मोमेंटम इक्वेशन जो आप लिखते हो वहीं से आपके पास ये आया है। सो एफ एक्स डैश इज इक्वल टू रो ए नॉट v1 स्क्वायर। नाउ सी हियर, एफ एक्स डैश इज इक्वल टू, नाउ रो की वैल्यू, राइट, ये आपके पास एफ एक्स डैश तो खैर 70 हो गया, ठीक है। रो की वैल्यू, वाटर जेट है ना मेरे भाई, यस वाटर जेट है, तो ये हो गया 1000 इंटू ये हो गया पाई बाई 4 इंटू यहां पे डायमीटर गिवन है 3 सेंटीमीटर, सो दिस इज 3 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई
या फिर एक काम करता हूँ, आई विल टेक अ नेक्स्ट स्लाइड, है ना, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास एफ डैश इज इक्वल टू, और एफ एक्स डैश इज इक्वल टू, दिस इज रो इंटू ए नॉट इंटू वी वन स्क्वायर। ना ये आपके पास गिवन है क्वेश्चन में कितना, 70, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है 70 इज इक्वल टू, दिस इज 1000 इंटू, दिस इज पाई बाई 4 इंटू व्हाट इज द एरिया, बताइए भाई। जो नोजल के एग्जिट का एरिया होगा वही तो जेट का भी एरिया होगा, मतलब आपके पास डायमीटर होगा 3 सेंटीमीटर। सो दिस इज पाई बाई 4 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा V1 स्क्वायर। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द V1? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द V1? बताइए यहां से V1 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है V1, बताइए जल्दी से। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द V1? अच्छा V2 बोल दो इसको, हाँ ठीक है, चलो एक काम करता हूं, इसको मैं V2 बोल देता हूं, यहां पे मैं ना V2 बोल देता हूं, मतलब इस सेक्शन को मैं 2 बोल देता हूं, और इस सेक्शन को मैं क्या बोलता हूं, इस सेक्शन को मैं 1 बोल देता हूं, ठीक है, प्रीटी फाइन। सो ये हो गया आपके पास V2, ये हो जाएगा V2, ये हो गया V2, और ये हो गया V2। चलो V2 बता दो दोस्त कितना आ रहा है, 9.951 आ रहा है, 9.951, दिस इज 9.951, 9.951 मीटर पर सेकेंड ये आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास आ गया V2। अब आप बताओ, चलो V2 आ गया, अब V2 आ गया, हमें निकालना क्या है दोस्त, हमें निकालना है ये H, है ना, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये H हमें निकालना है। अच्छा एक चीज बताओ, यहां पे डायग्राम में आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, आप मुझे बताना है। डायग्राम में देखो, यहां पे वेलोसिटी अगर ये V1 होगा, आप मुझे एक चीज बताना, कुछ डायग्राम में आपको गड़बड़ लग रहा है क्या? ये आपके पास यहाँ पे एरिया A1, यहाँ पे एरिया A2, यहाँ पे वेलोसिटी V2, यहाँ पे वेलोसिटी सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी V1, यहाँ पे वेलोसिटी V2, यहाँ पे प्रेशर P1, यहाँ पे प्रेशर P2। अच्छा आप यहाँ पे बताओ A1 जो होगा वो दिख रहा है, A1 ग्रेटर दिख रहा है ना A2 से, A1 अगर ग्रेटर है A2 से तो भाई सीधी सी बात है ना, A1 ग्रेटर है तो V1 जो होगा वो लेसर होगा किससे, V1 जो लेसर होगा ये होगा, V1 जो लेसर होगा वो क्या होगा, V2 से, सही बात है। और V1 है ना, V1 अगर लेसर है किससे, V1 लेसर है V2 से, तो आप बताओ P1 ग्रेटर होगा ना P2 से, P1 ग्रेटर होगा ना P2 से, बोलो। मतलब यहां पे जो प्रेशर होगा, यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हियर, तो मैनोमेटिक लिक्विड है वो कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होना चाहिए था, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, मतलब खैर उससे आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। चलो ये है ना, एक्चुअली ये H है दोस्त, ये H है ना, क्योंकि P1 ज्यादा होगा, ये आपका H, ये है क्वेश्चन में, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ था, थोड़ा देख लेंगे, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली तो थोड़ा आपको करेक्ट होना पड़ेगा ना, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो, अब यहां से देखो भाई, यहां से देख लो, हमने V2 तो निकाल लिया। अब आप बताइए, आपको डिस्चार्ज का फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू A1 A2, और ये लिखते हो आप रूट ओवर 2GH डैश अपॉन, ये हो जाएगा आपके पास रूट ओवर, ये हो गया A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखो यहां से Q बाई A2, सो Q बाई A2 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं V2, एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज A1, ये हो गया रूट ओवर, ये हो गया 2GH डैश अपॉन, ये हो जाएगा रूट ओवर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। चलो क्या यहां से आप मुझे एक चीज बताओ, क्या यहां से आप H डैश निकाल सकते हो क्या? क्या यहां से आप H डैश निकाल सकते हो क्या? क्योंकि A1 कितना हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू, दिस इज पाई बाई 4 इंटू, ये हो जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर था ना, 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, और A2 आपके पास हो जाएगा, दिस इज पाई बाई 4 इंटू, ये हो गया आपके पास 3 सेंटीमीटर था, सो 3 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। सो A1 और A2 तो आप यहां से निकाल सकते हो। आप मुझे बताओ, आप मुझे यहां से बताओ, ठीक है, क्या H डैश निकल जाएगा मेरे दोस्त? जल्दी मुझे बता देना, क्या H डैश निकल जाएगा क्या? जल्दी से मुझे बता देना, H डैश निकल जाएगा क्या? कितना आ रहा है H डैश? क्या 5 मीटर के आसपास आ रहा है क्या? आप मुझे बताइएगा, 5 मीटर के आसपास आपका H डैश आ रहा है क्या? 5 मीटर के आसपास आपका H डैश आ रहा है क्या, मुझे बता दीजिएगा।
5.01, ओके 5.01, ठीक है 5.01, 5.01 मीटर। चलो ये एच डैश आ गया। अब एच डैश इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज एच, कल भी मैंने आपको बताया था एच डैश इज इक्वल टू, ये मॉड में हो गया, दिस इज रो एम बाई रो एफ माइनस 1, ये हो गया है ना। तो यहां से हमको एच निकालना है, तो ये हो गया 5.01 इज इक्वल टू एच इंटू, अच्छा रो एम, मैनोमेटिक लिक्विड आपके पास क्या था यार, मैनोमेटिक लिक्विड आपके पास क्या था, मैनोमेटिक लिक्विड क्या था, आपने आंसर कैसे निकाल लिया, मैनोमेटिक लिक्विड, अच्छा मरकरी, मरकरी सॉरी, मरकरी यहां पे गिवन है, हाँ द मरकरी मैनोमीटर रीडिंग एच इज, ओके मरकरी गिवन है, तो मैनोमेटिक लिक्विड ये हो जाएगा आपके पास 13600, फ्लोइंग फ्लूइड आपके पास क्या है, वाटर है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1000 माइनस 1, है ना, ये हो गया आपके पास। चलिए ये हो गया, 2 शून्य चला गया, तो ये हो जाएगा 13.6, तो h इंटू दिस इज 12.6, ये हो जाएगा 12.6 एंड दिस इज 5.01। यहां से आप h के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, h कितना आ रहा है मुझे बता देना, 39 पॉइंट, यस करेक्ट 39.7 सेंटीमीटर, वेरी गुड। तो यहां से ये आ जाएगा 0.397, ये मीटर में आ रहा होगा, बट हमें आंसर 30 सेंटीमीटर में पूछा हुआ है, सो दिस इज 39.7 सेंटीमीटर, यस करेक्ट, बिल्कुल सही है, 39.7 सेंटीमीटर, बिल्कुल करेक्ट है 39.7, सो दिस इज द करेक्ट आंसर 39.7 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, बट यहां पे वेलोसिटी आपको नहीं पता है ना, आपको यहां पे वेलोसिटी नहीं पता है ना, आप वेलोसिटी कैसे निकालोगे, V1 यहां पे एरिया आपको, अच्छा वेलोसिटी कैसे निकालोगे, इसके लिए तो आपको ये यूज करना ही पड़ेगा ना, आपको मैनोमेटिक लिक्विड का डिफ्लेक्शन लेवल निकालना है, तो ये तो यूज करना ही पड़ेगा आपको। हाँ हाँ हाँ, वो तो, अरे ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, आप मुझे बताओ ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहाँ से आता है, व्हेन यू अप्लाई द बर्नौली देन यू आर गेटिंग दिस ना यार, वेंचुरी मीटर का आपके पास ये फॉर्मूला, व्हेन यू अप्लाई द बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली इक्वेशन जब आप अप्लाई करते हैं देन यू आर गेटिंग दिस ना, तो आप बर्नौली लगा के भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मुझे डायरेक्टली याद था, दैट्स वाई मैंने यहां से बना लिया, यू आर अप्लाइंग द बर्नौली यू आर गेटिंग द सेम थिंग, आपको सेम मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये तो आपके पास बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन आपने गेट एग्जाम में भी कई बार आया हुआ है, चाहे मैकेनिकल हो चाहे एक्सी हो, आई थिंक इसका आंसर सभी बच्चे कर लेंगे। एक सॉलिड ब्लॉक है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, फ्लोट सच दैट 75% of its volume is in water and 25% of its volume is in fluid X which is layered above the water, है ना। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे आपके पास दो फ्लूइड है ना, दो लिक्विड है, एक लिक्विड आपके पास क्या है वाटर है, और दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास एक्स है, राइट। सॉरी एक मिनट ना, सॉलिड ब्लॉक स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, ठीक है, एक सॉलिड ब्लॉक है, ये हो गया आपका सॉलिड ब्लॉक जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका कितना है, आपके पास 0.9 है, फ्लोट सच दैट 75% ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इन वाटर, राइट। 75% आपके पास क्या है, 75% जो है इसका वाटर में है, 75% जो है 75% वाटर में है, ठीक है, एंड 25% ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इन द फ्लूइड एक्स, तो ये फ्लूइड आपके पास एक्स है, विच लेयर अबव द, जस्ट 1 मिनट, एक्स विच इज अबव द, ओके सॉरी मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लास्ट में बोला हुआ है, ठीक है, ये आपके पास एक्स फ्लूइड है और ये आपके पास वाटर है, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड एक्स इज, राइट, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको फ्लूइड एक्स का बताना है,
फ्लूइड एक्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। चलो फटाफट कमेंट कर लेंगे, फटाफट कमेंट कर लेंगे, कितना आ रहा है। सो दिस इज अ फ्लूइड वाटर, ये एक्स, सॉरी ये एक्स फ्लूइड है, ये एक्स है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है वाटर। ठीक है, वाटर में आपके पास जो टोटल वॉल्यूम है उसका कितना परसेंट है, 75% है। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.75 टाइम्स ऑफ वी, ये हो जाएगा आपके पास 25%, सो 0.25 ऑफ वी। और आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको गिवन है, किसका, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है आपके पास सॉलिड ब्लॉक का। सो सिंपली अप्लाई कर लो, है ना। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन कौन से फोर्सेज एक्ट करने वाले हैं, यहाँ पे दो फोर्सेज एक्ट करने वाले, वेट और बायन फोर्स। वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, बायन फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, है ना। और वेट आपके पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गामा ऑफ सॉलिड ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ब्लॉक, राइट। सो वॉल्यूम आपके पास हो जाएगा, दिस इज टोटल वॉल्यूम आपके पास है, दैट इज वी, एंड दिस इज इक्वल टू, इधर आपके पास बायन फोर्स, तो ये हो जाएगा गामा 1। चलो एक काम करता हूँ, इसको मैं फ्लूइड नंबर 1 बोलता हूँ, इसको मैं फ्लूइड नंबर 2 बोलता हूँ। सो गामा 1, तो ये हो जाएगा गामा 1 इंटू V1, तो ये हो जाएगा 0.25 V, प्लस ये हो जाएगा गामा 2 इंटू ये हो जाएगा 0.75 V। करेक्ट है भाई। अब देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक काम किया जा सकता है, गामा W से डिवाइड कर दो, तो गामा W से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा, पहले V और V को तो निकाल दो, तो ये हो जाएगा S, है ना, S मल्टीप्लाइड बाई गामा W से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास क्या, ये मेरे पास आ गया S, तो ये हो गया S ऑफ द सॉलिड ब्लॉक, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा गामा 1, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी तो निकालना है, ये हो जाएगा S1 इंटू 0.25 प्लस नीचे वाला आपके पास वाटर ही था, ये आपके पास 0.75, राइट। SS आपके पास गिवन है 0.9, सो 0.9 इज इक्वल टू S1 इंटू 0.25 प्लस ये हो जाएगा 0.75। सो फटाफट आंसर बता देना, S1 आ रहा होगा 0.6, चेक कर लो, S1 आ रहा होगा 0.6, यस 0.6 आ रहा है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। सो दिस इज 0.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एक्स फ्लूइड का पूछा हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, MCQ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, MCQ क्वेश्चन है। देख लीजिए भाई, ऐसे क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, डायग्राम देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे क्वेश्चन आपने बनाए हैं, पहले भी बनाए हैं आपने। अच्छा MCQ है ना, MCQ है तो ऑप्शन भी देख लो, ये क्वेश्चन पहले पढ़ लो, क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, क्वेश्चन को पहले आप पढ़ लीजिए और उसके बाद आपके पास ऑप्शन को देख लीजिए। अब जो बच्चे आपके पास लगातार सेशन अटेंड कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से कर लेंगे, है ना। जो बच्चे लगातार सेशन अटेंड कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, वो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से कर लेंगे, वो घबराएंगे नहीं क्वेश्चन को देख के। बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार सॉल्व किया हुआ है पहले की क्लासेस में भी, राइट। यहाँ पे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, एज शोन इन द फिगर विल हैव द लैमिनार वेलोसिटी प्रोफाइल u इज इक्वल टू u नॉट 2y बाई एच माइनस वाई स्क्वायर एच स्क्वायर। पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल है आपके पास, वेयर u नॉट इज द सरफेस वेलोसिटी। इफ प्लेन हैज विड्थ b परपेंडिकुलर टू द मॉनिटर, देन द वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द लिक्विड विल बी। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या करना है, वॉल्यूम फ्लो रेट आपको बताना है। सो वॉल्यूम फ्लो रेट बताना है, तो मैंने इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको दो तरीके के मेथड बताए हुए हैं। एक, या तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, और दूसरा तो आप डायरेक्टली फिर क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का कॉन्सेप्ट यूज करके भी इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं।
बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर आप इंटीग्रेशन मेथड पे आप जाते हो, तो इंटीग्रेशन मेथड पे आप जाएंगे तो यहां से देखो, मैंने यहां पे क्या किया, वाई डिस्टेंस पे जाके यहां से मैं वाई डिस्टेंस पे जाता हूं और एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं, और ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इस स्मॉल एलिमेंट का ये जो डायमेंशन है, दिस डायमेंशन इज डी वाई। सो एरिया की अगर मैं बात करूं, है ना, अगर मैं एरिया की बात करूं तो देखो भाई, यहाँ पे एरिया वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द लिक्विड विल बी, चलो आपको W के फॉर्म में दिया है क्या, अच्छा B आपको विड्थ दिया हुआ है ना, B आपको विड्थ जो है ये दिया हुआ है, विड्थ B दिया हुआ है, तो एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, दिस DA इज इक्वल टू दिस इज B मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा आपके पास dy। तो सबसे पहले तो आप बता दो ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इस स्मॉल एलिमेंट से कितना मास फ्लो रेट हो रहा है, तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इस स्मॉल एलिमेंट से कितना मास फ्लो रेट हो जाएगा, दिस इज रो इनटू एरिया इनटू ये हो गया वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा आपके पास रो इनटू ये हो जाएगा b इनटू ये हो जाएगा u इनटू और ये हो गया dy, ठीक है। चलो अगर ये तो dm डॉट है, बट मुझे निकालना क्या है, मुझे तो निकालना m डॉट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कहां से कहां लिमिट मार दूं, 0 टेंस टू h, ये हो जाएगा 0 टेंस टू h और ये हो गया रो इनटू b इनटू u इनटू और ये हो गया आपके पास dy, ठीक है क्या। तो यहां से आप देख लो भाई, सो m डॉट इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन 0 टेंस टू h, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, रो कांस्टेंट है b कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, रो कांस्टेंट है b कांस्टेंट है बाहर आ गया। अच्छा अगला देख लो, फिर उसके बाद u का आपके पास गिवन है वेरिएशन u नॉट, यार ये हो जाएगा आपके पास u नॉट और ये हो गया 2y/h, है ना, 2y/h, ये हो जाएगा 2y/h माइनस ये हो जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर, और दोस्त ये हो गया आपके पास dy, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो गया रो इनटू b इनटू ये हो गया u नॉट, ठीक है, और अंदर में क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, है ना, वाई स्क्वायर बाई 2 ये हो गया, सॉरी 2y स्क्वायर बाई 2h ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपके पास y क्यूब डिवाइडेड बाई ये हो गया 3h स्क्वायर, एंड लिमिट आपके पास हो जाएगा 0 टेंस टू h, 2 से 2 चला गया, एक h से h चला जाएगा, यहां से आपके पास, एक मिनट इसको मैं पहले, लिमिट है ना ये 2 से 2 चला गया, अंदर में आपके पास बचेगा h माइनस इधर आ जाएगा आपके पास h बाई 3 ये हो जाएगा h बाई 3 इंटू इधर हो जाएगा रो इंटू बी इंटू ये हो गया यू नॉट, है ना। तो यहां से आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास m डॉट है, डिवाइडेड बाई रो करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको q मिलेगा, है ना, एंड दिस इज b मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया u नॉट मल्टीप्लाइड बाई और ये हो जाएगा 2h बाई 3, है ना, यही आ गया आपके पास, तो ये हो जाएगा 2/3 b इंटू h इंटू यू नॉट, चेक कर लो ये आ रहा है क्या, 2/3 कहाँ गया, हाँ 2/3 u नॉट इंटू बी इंटू एच, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही, सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो एक तरीका तो आपके पास, यस बिल्कुल, एक तरीका तो आपके पास इंटीग्रेशन है, बिल्कुल बिल्कुल, एक तरीका तो आपके पास क्या है, एक तरीका तो आपके पास इंटीग्रेशन करके है, और दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया है, क्या सभी को दूसरा तरीका बताने की फिर से जरूरत है मेरे को, क्या बताइए, मुझे दूसरा तरीका फिर से बताने की जरूरत है क्या, क्या मुझे दूसरा तरीका फिर से बताने की जरूरत है क्या, बताइए। अरे भाई देखो ना यहाँ पे, ये पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल है, ये आपके पास क्या, ये आपके पास पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल है, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का फॉर्मेशन होगा, चलो ये हो गया आपके पास डेल्टा डी, और ये जो डेल्टा डी है, ठीक है, पैराबोलिक सेकेंड डिग्री पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल है, नहीं 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 बिल्कुल नहीं आदित्य, यहाँ तो देखो ना आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वैसे ही तो फ्रेम है यार, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके पास वैसे ही तो फ्रेम है, ठीक है। सो डेल्टा डी इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा डी इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास h बाई क्या हो जाएगा, h/3, ठीक है। तो अब यहां से आप देखो, यहां से जो मास फ्लो रेट होगा, यहां से जो मास फ्लो रेट होगा वो कितना होगा, यहां पे आपके पास जो होगा उसमें से यूनिफॉर्म होगा, उसमें से यहां से जो मास फ्लो रेट होगा उसको आप माइनस कर देंगे, सेम आंसर आएगा, ठीक है, यस बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये नहीं बता रहा हूं क्योंकि कई बार मैंने ये चीज डिस्कशन किया हुआ है, कई बार मैंने ये डिस्कशन किया हुआ है, मैं फर्दर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। चलो आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं अगले क्वेश्चन की तरफ,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अ पोरस राउंड ट्यूब विथ डायमीटर 60 mm कैरीज वाटर, द इनलेट वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म विथ v1 इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड, वाटर फ्लोज रेडियली एंड asymmetrically outward through the porous wall with velocity distribution u is equal to v naught 1 minus x by l का whole square, where v naught is 0.03 meter per second and l is equal to 0.950 meter. The mass flow rate inside the tube at x is equal to l is. तो देखो एक्चुअली आपके पास कैसा है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पास कैसा है, देखो भाई आपके पास ना एक ट्यूब है ना, आपके पास क्या है, आपके पास एक ट्यूब है, इस तरीके से आपके पास एक ट्यूब है, दिस इज द ट्यूब। ये आपके पास ट्यूब है, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखो भाई, यहां पे अगर आप देखोगे दिस इज एक्स इज इक्वल टू 0, चलो ये मेरा एक्स इज इक्वल टू 0 है, ये मेरा एक्स इज इक्वल टू एल मैंने बोल दिया इसको। अब क्या बोला है यहाँ पे, आपके पास जो ये ट्यूब है ना, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब का वॉल जो है ना वो पोरस है, मतलब वहां से आपके पास क्या है, आपके पास ठीक है जो फ्लूइड है वो फ्लूइड आपके पास बाहर निकल रहा है। लिखो लिखा हुआ है अ पोरस राउंड ट्यूब विथ डायमीटर कैपिटल डी, सो द डायमीटर इज कैपिटल डी, ये आपके पास डायमीटर है, दिस डायमीटर इज कैपिटल डी, 60 mm गिवन है, कैरीज वाटर, द इनलेट वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, यहां पे जो वेलोसिटी है ना, द इनलेट वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनलेट वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म एंड दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड, द वाटर फ्लोज रेडियली एंड असिमेट्रिकली आउटवर्ड थ्रू द पोरस वॉल, तो पोरस वॉल से आपके पास क्या होगा, वाटर बाहर की तरफ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा ना बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ निकलेगा तो उसके लिए आपको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है विच इज u इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस एक्स बाई एल स्क्वायर। अब यहां पे देखो ये आपका एक्स डायरेक्शन दिख रहा है दोस्त, ये आपका x डायरेक्शन दिख रहा है ना, x is equal to 0, if you put here x is equal to 0, u is equal to v naught, if you put x is equal to l, then u is equal to 0, and how this variation is parabolic, second degree parabola, साफ साफ आपको दिख रहा है यहाँ से, that is a second degree parabola। so यहाँ से अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आपको शो करूं, है ना, जो पोरस वॉल से जो आपके पास फ्लूइड बाहर निकल रहा है, पोरस वॉल से जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है, देखो यहाँ पे if I show the velocity distribution, so it is something like that, कुछ इस तरीके से आपके पास बनने वाला है। देखो यहाँ पे तो वेलोसिटी आपके पास, आई एम सॉरी यार, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, ये वेलोसिटी आपके पास क्या होगा, दिस वेलोसिटी इज, ये तो v नॉट के बराबर होगा, दिस वेलोसिटी इज v नॉट, है ना, और जैसे जैसे आप x डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो ये वेलोसिटी क्या होता जाएगा, ये वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, और फाइनली एट x इज इक्वल टू l पे जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही दिया है क्वेश्चन में, है ना, यही क्वेश्चन में दिया है। देखो पैराबोलिकली आपके पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंड फाइनली एट x इज इक्वल टू l पे द वेलोसिटी इज 0। क्या समझ रहे हो मेरी बातें, क्या मेरी बातों को आप समझ रहे हो या नहीं, जल्दी बता दीजिए। चलो अब यहां पे देखो भाई, वेरी गुड, किसी का आंसर आ गया, वेरी गुड। चलो अब यहां पे देखो, यहां पे अगर आप देखेंगे, सो कैन वी अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मास, आप देखो ना कंजर्वेशन ऑफ मास अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहां पे जो मास एंटर हो रहा है, चलो मैंने इसको बोला ये आपके पास है m डॉट ई, यहां से जो आपके पास मास एग्जिट हो रहा है इसको मैंने बोल दिया m डॉट ई, और ये जो पोरस वॉल से जो निकलेगा इसको मैंने बोल दिया, चलिए पोरस वॉल से जो है ये है m डॉट पी। So if you apply the conservation of mass, राइट, आप क्या लिख सकते हैं यार, कंजर्वेशन ऑफ मास अगर आप अप्लाई करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन आप अप्लाई करेंगे, आप क्या लिख सकते हैं, देखो आपके पास मास एंटरिंग m डॉट इन इज इक्वल टू, चलो m डॉट ई प्लस ये हो गया आपके पास m डॉट पी। मान लीजिए यहाँ पे 50 यूनिट एंटर कर रहा है, यहाँ से 20 निकल रहा है तो 30 इधर से निकलेगा, तो 50 इज इक्वल टू 30 प्लस 20, यही तो लिखा है मैंने वहां पे,
ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज द एम डॉट ई, क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट इज द एम डॉट ई। सो व्हाट इज द एम डॉट ई, तो ये हो जाएगा एम डॉट इन माइनस ये हो गया एम डॉट पी। मतलब पोरस वॉल से मास फ्लो रेट आपको निकालना पड़ेगा कि इस पोरस वॉल से कितना मास फ्लो रेट हो रहा है, यहां से कितना एंटर हो रहा है ये तो हम निकाल लेंगे क्योंकि यहां पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। गेटिंग माय पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, यस और नो। ठीक है, चलो अब देख लो भाई, यहां से देख लीजिए। यहां से सबसे पहले तो बताओ एम डॉट आई, एम डॉट आई क्या हो जाएगा, यहां से आपके पास एम डॉट आई, बताओ एम डॉट आई कितना हो जाएगा, व्हाट इज द एम डॉट आई, बताओ एम डॉट आई कितना हो जाएगा। तो देखो वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है इनलेट पे, तो ये हो जाएगा रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो देखो रो इंटू ये हो गया एरिया इंटू ये हो जाएगा आपके पास वेलोसिटी, और इनलेट पे जो वेलोसिटी है, इनलेट पे जो वेलोसिटी है वो कितना आपके पास, दैट इज v1। देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में v1, ठीक है। तो रो इंटू एरिया इंटू ये हो गया आपके पास v1। सो रो इंटू नाउ व्हाट इज द एरिया, दिस इज पाई बाई 4, ये हो गया डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई v1। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आपको तकलीफ होने वाली है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी तकलीफ होने वाली है, आई डोंट थिंक सो, राइट। दिस इज द एम डॉट वन। आपको तकलीफ जो थोड़ी होगी वो किस में होगी मैं बताऊं, तकलीफ जो होगी आपको एम डॉट पी निकालने में होगी। और क्या तकलीफ होगी मैं बताऊं, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी वेरी कर रहा है, और ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, अरे ऐसा जब भी आपके पास इस तरीके से देखते हो वेरिएशन हो रहा है, तो वहां पे तुरंत ही इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आना चाहिए। और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपको दिमाग में आएगा तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे देखो एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूं। चलो ये मैंने क्या कर लिया, यहां पे मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, और ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इस स्मॉल एलिमेंट से जो, चलो ये जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन को मैंने बोला ये डायमेंशन है dx, ये डायमेंशन मेरे पास क्या है, ये डायमेंशन मेरे पास है dx, राइट। और यहां से जो मास फ्लो रेट हो रहा है, चलो मैंने बोल दिया ये मास फ्लो रेट आपके पास क्या है, dm डॉट। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए तो dm डॉट पहले देख लेते हैं, देखो यहां से, तो ये हो गया आपके पास dm डॉट इज इक्वल टू, बताओ dm डॉट कितना हो जाएगा, व्हाट इज dm डॉट। सो dm डॉट इज इक्वल टू, बताओ कितना हो जाएगा, रो इंटू ये हो गया रो मल्टीप्लाइड बाई एरिया। सो व्हाट इज द स्मॉल एलिमेंटल एरिया हियर, व्हाट इज द dA हियर, बोलो जल्दी से बताओ dA, कौन बच्चा बता रहा है, व्हाट इज dA, व्हाट इज द dA। क्या मैं लिख सकता हूं, दिस इज द 2 पाई r इंटू dx, 2 पाई r इंटू dx। भाई सरकमफेरेंशियल एरिया, पेरीमीटर इंटू dx, यही तो वो एरिया है ना जहां से आपके पास मास फ्लो रेट बाहर निकल रहा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, भाई 2 पाई r इंटू dx। तो ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज 2 पाई r इंटू ये हो गया dx मल्टीप्लाइड बाई द वेलोसिटी, एंड दैट वेलोसिटी इज u, ये हो गया आपके पास, ठीक है। चलो भाई अब यहां से देख लो, तो ये हो गया रो मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया u, ये हो गया 2 पाई r, और ये हो गया dx, ये हो गया dm डॉट। चलो इंटीग्रेशन कर दे, इंटीग्रेशन कर दे, कहां से कहां, लिमिट, x की लिमिट कहां से कहां है देख लो, x की लिमिट 0 टेंस टू l, ये हो जाएगा 0 टेंस टू l, और ये हो जाएगा आपके पास m डॉट p। दिस इज इक्वल टू, रो कांस्टेंट है बाहर ले आओ, 2 पाई कांस्टेंट है बाहर ले आओ, r कांस्टेंट है बाहर ले आओ, अंदर में आपके पास क्या बचेगा, अंदर में आपके पास u बचा है, एंड u का वेरिएशन v नॉट, ये हो जाएगा दोस्त v नॉट 1 माइनस एक्स बाई एल का होल स्क्वायर, एक्स बाई एल का होल स्क्वायर, यही है ना, देख लेना, v नॉट 1 माइनस एक्स बाई एल का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये हो जाएगा आपके पास dx, ये हो जाएगा आपके पास क्या हो गया dx, ठीक है। चलो यहां पे फटाफट बता देना यार, यहां से फटाफट बता देना, m डॉट पी, यहां से v नॉट को बाहर निकाल लो, ये हो गया रो इंटू 2 पाई इंटू आर इंटू ये हो गया v नॉट, ठीक है। यहां से देख लो, तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस ये हो जाएगा x क्यूब डिवाइडेड बाई ये हो गया 3l स्क्वायर, एंड व्हाट इज द लिमिट 0 टेंस टू l, राइट। तो ये हो जाएगा रो इंटू 2 पाई r इंटू ये हो गया v नॉट इंटू, राइट, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास l माइनस ये हो जाएगा l बाई 3, l माइनस l बाई 3, सो दिस इज 2l बाई 3। देखो यहां से आपके पास नाउ रो इज नोन, r इज नोन, v नॉट इज नोन, l इज नोन,
गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें निकालना क्या था, हमें तो निकालना था एम डॉट ई, सो एम डॉट ई इज इक्वल टू एम डॉट आई, सो दिस इज रो इनटू, चाहो तो आप पाई आर स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पाई आर स्क्वायर इंटू वी वन, राइट। उसमें से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा रो इंटू, ये हो गया 2 पाई इंटू, ये हो गया आर इंटू, ये हो गया वी नॉट इंटू, दिस इज 2l/3, राइट, दिस इज 2l/3। यहां से मुझे फटाफट एम डॉट ई के ऊपर कमेंट कर लो, बता दीजिए एम डॉट ई आपके पास कितना आ रहा है, चेक कर लीजिए कितना आ रहा है, मुझे बता देना। कितना आ रहा है मुझे बता देना। मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करके? मजा आया ये क्वेश्चन सॉल्व करके? 16.21, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितना आ रहा है बताओ? 16.21 के आसपास आ रहा है, चेक करना। एम डॉट ई कितना आ रहा है? 16.21 kg पर सेकेंड। चेक करना ये आ रहा है क्या? Everyone getting the same answer? Yes, okay, okay. अरे भाई क्यों टाइम पास करने आ जाते हो यार, आराम से जाओ घर में जाके रील्स बनाओ। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है दोस्त, है ना। कुछ लोग ऐसे, पता नहीं यार क्यों भाई, क्यों। थोड़ा जाओ घर में, जाओ रील वील बनाओ, बढ़िया मस्त से इंस्टाग्राम चलाओ। आपका यहाँ पे कोई यूज नहीं है, आके आप स्पैमिंग करोगे, आके आप कुछ भी करोगे। थोड़ा नाचो वाचो, रील्स में नाचते ना, बढ़िया मस्त नाचो वाचो, थोड़ा फेमस भी हो जाओगे। यहाँ आके पता नहीं, ये नहीं है तुम्हारे काम का, ये सब नहीं है तुम्हारे काम का, है ना। ये सब नहीं है, ये मत पढ़ो, ये कोई काम नहीं आएगा। एंड आई एम वॉन्डरिंग, मैं ये सोच रहा हूँ यार, इतना सुबह सुबह मतलब कैसे, कहाँ से ये मोटिवेशन आता है ना, कहाँ से ये मोटिवेशन आता है कि सुबह सुबह जाके सर का लेक्चर जाके देखूंगा, वहां पे कुछ कुछ करूंगा तो मैं फेमस हो जाऊंगा। ऐसा फेमस नहीं होने वाले, बस रील में नाचो, वहां से फेमस हो गए आप। चलो देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके पास पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन आपके पास पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। वेरी गुड, कुछ लोगों का आंसर आया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अ फ्लूइड विथ डेंसिटी रो इज इक्वल टू 750 kg per meter cube, right? A fluid with a density rho is equal to 750 kg per meter cube flows along a flat plate of width 1 meter. The undistributed free stream speed is u naught, ठीक है। आपके पास जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपके पास गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड एट एल इज इक्वल टू 1 meter डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द प्लेट, द बाउंड्री लेयर थिकनेस इज 5 millimeter. The velocity profile at this location is u is equal to u naught 3/2 y by delta minus 1/2 y by delta का whole cube.
द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द प्लेट to the plate stationary in a Newton is right. good, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सो यहां से अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपके पास है. चलो ये आपके पास हो गया प्लेट, राइट. दिस इज द प्लेट, ये आपके पास है प्लेट, दिस इज द प्लेट एंड दिस इज द, चलो इसके ऊपर से क्या हो रहा है, इसके ऊपर से फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है. तो आपको जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब आपको जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है ना, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है. चलिए ये आपके पास यूनिफॉर्म फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी एंड व्हाट इज दैट गिवन, u नॉट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. ये आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, राइट. और जब ये फ्लूइड आपके पास इस प्लेट के ऊपर से फ्लो हो रहा है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द बाउंड्री लेयर. बाउंड्री लेयर का क्या होगा, बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा. चलो ये बात भी करेक्ट है ना. सही. अब आपको यहां पे एक पर्टिकुलर देखो क्या बोला हुआ है, राइट. डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द प्लेट द बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा इज इक्वल टू 5 mm. बिल्कुल सही बात है. द वेलोसिटी प्रोफाइल एट दिस लोकेशन इज, सो यहां से ये दिस इज योर लीडिंग एज, दिस इज योर लीडिंग एज, है ना. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेलिंग एज. दिस इज द ट्रेलिंग एज, राइट. दिस इज द लीडिंग एज एंड दिस इज द ट्रेलिंग एज, राइट. अब देखो लीडिंग एज से डाउन स्ट्रीम मतलब डेफिनेटली इन दिस साइड एक पर्टिकुलर सेक्शन पे जो वेलोसिटी का जो वेरिएशन है y के साथ, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है एंड दिस इज गिवन, राइट. आई थिंक क्यूबिक वेलोसिटी प्रोफाइल है, करेक्ट. u इज इक्वल टू u नॉट, this is u by u naught is equal to, this is 3y by 2 delta, this is 3y by 2 delta minus ये हो जाएगा 1 by 2, this is 1 by 2 and this is y by delta का होल क्यूब. ये आपके पास गिवन है, राइट. ये आपके पास क्या है, ये आपके पास गिवन है. अच्छा अब यहां पे एक चीज समझिए, आपको क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, उसको पढ़ते हैं. जब आपके पास फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है तो डेफिनेटली दिस प्लेट एक्सपीरियंसेस अ ड्रैग फोर्स, राइट. ये जो आपके पास प्लेट है, इस प्लेट में आपके पास एक ड्रैग फोर्स आने वाला है. सो बोला हुआ है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द प्लेट स्टेशनरी. तो ये जो आपके पास प्लेट है, इस प्लेट में मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगाऊं सो दैट ये जो प्लेट है, ये प्लेट स्टेशनरी पोजीशन पे रहे. तो ड्रैग फोर्स लगने के कारण से ये जो प्लेट है, ये प्लेट क्योंकि ड्रैग फोर्स लगेगा वो एक्स डायरेक्शन में लगेगा, दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, ठीक है. दिस इज योर एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज योर वाई डायरेक्शन, ठीक है. तो ये जो ड्रैग फोर्स है, ये जो ड्रैग फोर्स है, इस ड्रैग फोर्स के अगेंस्ट में आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना है. तो वो एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा ये पूछा हुआ है. तो देख मेरे भाई, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ना, ड्रैग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहने वाला है, डायरेक्शन अपोजिट होगा, राइट. मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है. इस क्वेश्चन में आपको मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, आप डायरेक्टली ड्रैग फोर्स निकाल लो, क्या दिक्कत है. सो ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू, अगर आप लिखेंगे ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू, बताओ ये किसके इक्वल हो जाएगा. ये जो ड्रैग फोर्स है, ये किसके इक्वल हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू, अगर आप न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर आप जानते हैं तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से समेशन f इज इक्वल टू, या f इज इक्वल टू मैं यहां पे सिंपली लिखूं, f इज इक्वल टू ये हो गया किसके इक्वल होता है. दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो यहां पे मैं एनालिसिस करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कंसीडरिंग अ कंट्रोल वॉल्यूम. सो दिस इज माय कंट्रोल वॉल्यूम. चलो ये मेरा क्या है, ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है, ये मेरा क्या है, ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है. दिस इज माय कंट्रोल वॉल्यूम, है ना. और ये जो कंट्रोल वॉल्यूम आप देख रहे हो, तो चलो इसका अगर मैं नामकरण करूं, दिस इज अ 1 एंड दिस इज अ 2 ये हो गया आपके पास, राइट. सो कैन वी से एफ जो होगा किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो यहां पे अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखो यहां पे जो मोमेंटम रेट होगा और यहां पे जो मोमेंटम रेट होगा, दैट मोमेंटम रेट आर नॉट सेम. सो देयर इज लॉस इन मोमेंटम रेट, यहां पे आपके पास मोमेंटम रेट में लॉस होने वाला है. और जो मोमेंटम रेट में जो लॉस होगा दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगा,
राइट, और वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वही इक्वल होने वाला है किसके, वही इक्वल होने वाला है ड्रैग फोर्स के. सो डायरेक्टली आई कैन से द एफ इज इक्वल टू, राइट, एफ इज इक्वल टू दिस इज, और एफ इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू rate of change of momentum, rate of change of momentum between 1 1 and 2 2. ये हो गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बिटवीन 1 and 1 and 2 2. सो 1 1 सेक्शन 2 2 सेक्शन के बीच में जितना आपके पास मोमेंटम चेंज होने वाला है, जितना आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होने वाला है, दैट इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स. अच्छा, अब आपके पास थोड़ा सा मोमेंटम थिकनेस का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए. मोमेंटम थिकनेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ लो. सो मोमेंटम थिकनेस होता क्या है, देखो आपके पास यहाँ पे मोमेंटम रेट यहाँ पे और मोमेंटम रेट यहाँ पे सेम नहीं होने वाला है. तो भाई यहाँ पे देखो इस लॉस इन मोमेंटम रेट, राइट, इस लॉस इन मोमेंटम रेट को कंपनसेट करने के लिए बाउंड्री जितनी शिफ्ट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम थिकनेस, है ना. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम थिकनेस. ये हो गया आपके पास मोमेंटम थिकनेस, इसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम थिकनेस. ये हो गया आपके पास डेल्टा एम. तो अब आपके पास यहां से जो मोमेंटम रेट निकलने वाला है, वो जो डेल्टा एम थिकनेस है, वहां से जो मोमेंटम रेट निकलने वाला है वही आपके पास किसके इक्वल होगा, लॉस इन मोमेंटम रेट बिटवीन 1 1 सेक्शन एंड द 2 2 सेक्शन. राइट, मतलब मैं यहां पे ये लिख सकता हूं दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मोमेंटम रेट फ्रॉम मोमेंटम थिकनेस, momentum rate from momentum thickness, momentum rate from momentum thickness, right. So what is the momentum rate from the momentum thickness, that is equal to, right, ये हो जाएगा आपके पास fd is equal to, right, ये हो जाएगा momentum rate. so ये हो जाएगा m डॉट, या फिर मैं ऐसा लिखता हूं, देखो ये हो गया रो इनटू एरिया. कौन सा एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास मोमेंटम थिकनेस मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर टू द मॉनिटर विड्थ. ये हो जाएगा रो इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी, रो इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी. तो आउटसाइड द बाउंड्री लेयर एवरीवेयर द वेलोसिटी इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो रो इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू, ये हो गया आपके पास वेलोसिटी. मोमेंटम रेट क्या होता है, मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी. सो आउटसाइड द बाउंड्री लेयर द वेलोसिटी इज यू इन्फिनिटी, है ना, यू इन्फिनिटी और यू नॉट, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा. तो यहां से आप देखोगे एफ डी इज इक्वल टू, ये हो गया रो इंटू, ये हो जाएगा डेल्टा एम इंटू, ये हो जाएगा डब्ल्यू इंटू, और ये हो गया दिस इज यू इन्फिनिटी स्क्वायर. अब इस क्वेश्चन में ना आपको सिर्फ डेल्टा एम के ऊपर वर्कआउट करना है. इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ डेल्टा एम के ऊपर क्या करना है, डेल्टा एम के ऊपर वर्कआउट करना है. और डेल्टा एम के ऊपर आप वर्कआउट करोगे तो डेल्टा एम मोमेंटम थिकनेस कैसे निकालते हैं भाई, ये हो गया 0 टेंस टू डेल्टा, ये हो गया यू बाई यू इन्फिनिटी, एंड दिस इज 1 माइनस u बाई यू इन्फिनेटिव इंटू डी वाई. क्या यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, क्या यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है क्या आपके पास मोमेंटम थिकनेस का. अब आपको क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, u बाई यू इन्फिनेटिव, दिस इज गिवन इन द प्रॉब्लम, दिस इज 3 बाई, आपको u बाई कैपिटल यू नॉट गिवन होगा ना, ठीक है, मैं u इन्फिनेटिव लिख रहा हूँ, यू नॉट को, दिस इज 3 बाई 2 वाई डेल्टा. ये हो जाएगा आपके पास 3 बाई 2, ये हो गया y बाई डेल्टा माइनस, ये हो जाएगा यार 1 बाई 2 वाई बाई डेल्टा क्यूब, ये हो जाएगा 1 बाई 2 वाई बाई डेल्टा क्यूब. तो अगर इसका आपको डायरेक्टली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद है, अगर आपको इसका डायरेक्टली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, गेटिंग माई पॉइंट, आपको सॉल्व करना पड़ेगा. राइट, तो कितना आता है आपके पास मोमेंटम थिकनेस, इस प्रोफाइल के लिए जो मोमेंटम थिकनेस है वो आपके पास कितना आता है, मोमेंटम थिकनेस 39/280 डेल्टा, ऐसा कुछ आता है क्या, एक बार चेक कर लो भाई. मोमेंटम थिकनेस फॉर्मूला आपके पास है ना, बिल्कुल 39/280 डेल्टा. वेरी गुड, 39/280 डेल्टा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. चलो अब आपके पास कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, आप एफ डी निकाल लो. सो ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू रो
रो आपको गिवन था 750, रो आपको गिवन था 750 इनटू ये हो गया आपके पास 39 डिवाइडेड बाई 280 इनटू डेल्टा. व्हाट इज द डेल्टा? व्हाट इज द डेल्टा? व्हाट इज द डेल्टा? L is equal to 1 meter bound. Okay, 5 mm. So this is 5 into 10 to the power minus 3 into W. width आपके पास 1 है क्या? अच्छा L1, सॉरी width 1 मीटर. ये हो गया आपके पास 1 इंटू यू इन्फिनिटिव का स्क्वायर 10, ये हो गया 10 का स्क्वायर. ठीक है, यहां से आप निकाल लो ड्रैग फोर्स कितना आ रहा है. यस यस एग्जैक्टली करना पड़ेगा. अगर आपको रैंडम कोई और प्रोफाइल दे दिया तो आपको करना पड़ेगा, है ना, निकालना पड़ेगा रोहित. 52.2 के आसपास कुछ आ रहा है क्या? 52.23 न्यूटन. दिस इज द ड्रैग फोर्स. This is the drag force as well as this is the external horizontal force which is required to keep the plate stationary. Yes, 52.23. Very good, बहुत बढ़िया. कोई और दूसरा प्रोफाइल है तो बिल्कुल आपको निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा आपको. ठीक है, बट कुछ स्टैंडर्ड प्रोफाइल है जैसे कि आपके पास लैमिनार वेलोसिटी प्रोफाइल में लीनियर हो गया, सेकेंड डिग्री पैराबोलिक हो गया, थर्ड डिग्री आपके पास पैराबोलिक होगा. इसका थोड़ा याद रखने की कोशिश कर लेना, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, अगर आप याद कर लेते हो तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप निकाल नहीं पाओगे. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप निकाल तो जरूर लोगे, लेकिन इसी में थोड़ा सा टाइम बच जाता है. जिसको याद होगा वो डायरेक्टली लिख लेगा और जिसको याद नहीं है फिर वो सॉल्व करता रहेगा, है ना. हालांकि इंटीग्रेशन आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंदी तो रहेगा ना, मतलब आपके पास 4-5 स्टेप तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा. एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन. कितना आ रहा है चेक करो, कितना आ रहा है चेक करना. इन द गिवन फिगर वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड गैसोलीन S is equal to 0.7 are open to atmosphere and are at the same elevation. The height h in the third liquid is, third liquid that means ये वाला जो लिक्विड है ना, ये वाला जो लिक्विड है, ठीक है, यहां तक आपके पास वाटर है और ये आपके पास फिर थर्ड लिक्विड है. तो ये जो थर्ड लिक्विड है उसके लिए आपको h के ऊपर कमेंट करना है जो डायग्राम में आपको यहाँ पे गिवन है. डायग्राम में जो आपको गिवन है, तो देखो भाई यहां से अगर आप लॉजिक लगाओगे, देखिए बॉटम पे जो यहाँ पे प्रेशर होगा, ठीक है, बॉटम पे जो प्रेशर होगा, अगर आप
यहां से देखते हो तो बॉटम पे जो प्रेशर होगा, यहां पे प्रेशर, और यहां से आप देखोगे तो बॉटम पे जो प्रेशर होगा वो तो आपके पास सेम ही रहने वाला है ना, सेम रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है बॉटम पे प्रेशर? जल्दी से बताओ भाई। तो यहां से अगर आप देखोगे, चलो इस साइड पे अगर आप देखोगे तो ये मैं लिख सकता हूं क्या, ये हो गया रो इंटू जी, या रो इंटू जी ये हो गया वाटर का, इंटू ये हो जाएगा 1.5 प्लस प्लस, राइट, प्लस ये हो जाएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाइड बाई, दिस इज 1 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो गया आपके पास जो रैंडम लिक्विड का गिवन है ये। ठीक है, चलो इधर से निकाल लिया, अब इधर से निकाल लो। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रो जी किसका, गैसोलीन का, मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, ये देखो, ये टोटल आपके पास है 2.5, उसमें से h माइनस कर देना, तो ये हो जाएगा 2.5 माइनस h, ये हो गया, प्लस प्लस ये हो गया आपके पास थर्ड लिक्विड जिसके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको गिवन है, तो ये हो जाएगा आपके पास h मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा आपके पास रो जी, किसका रो जी, आपके पास डेफिनेटली इस लिक्विड का, तो ये हो गया रो जी ऑफ लिक्विड। एक काम कर लेते हैं, दोनों साइड क्या कर लेते हैं, दोनों साइड गामा डब्ल्यू से डिवाइड कर लेते हैं, दोनों साइड क्या कर लेते हैं, गामा डब्ल्यू से क्या कर लेते हैं, गामा डब्ल्यू से डिवाइड कर लेते हैं। तो दोनों साइड अगर गामा डब्ल्यू से डिवाइड कर लोगे, गामा डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा दोस्त 1.5 प्लस, इधर आ जाएगा आपके पास लिक्विड, तो लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी तो आपको दी 1.6 है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.6 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा रो जी ऑफ गैसोलीन टू आपके पास वाटर की वाटर का वेट डेंसिटी, सो दिस इज 0.7 इनटू, राइट, ये हो जाएगा 2.5 माइनस एच प्लस, ये हो जाएगा एच मल्टीप्लाइड बाई नो रोजी ऑफ लिक्विड, सो लिक्विड का 1.6, ये हो गया 1.6, यहां से आप एच निकाल लो, चेक करना है एच कितना आ रहा है, व्हाट इज द एच यू आर गेटिंग, व्हाट इज द एच यू आर गेटिंग, कितना आ रहा है चेक करना, 1.5 आ रहा है, चेक करेंगे, 1.5 मीटर आ रहा है, 1.5 मीटर चेक कर लेना, 1.5 मीटर आ रहा है, चेक कर लो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस 1.5 इज द करेक्ट आंसर, 1.5 इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला हुआ है, द टैंक ऑफ वेट 500 न्यूटन when empty, right, when empty contains 600 liter of water at 20 degrees Celsius. Pipe 1 and 2 have equal diameter of 6 centimeter. Pipe 1 मतलब यार ये आपका पाइप 1 है और ये आपका पाइप 2 है, एंड इक्वल स्टडी वॉल्यूम ऑफ 300 मीटर क्यूब पर आवर। बोलने का मतलब मेरा ये है, स्टडी वॉल्यूम बोलने का मतलब कि जितना इधर से आ रहा है उतना इधर से जा रहा है, जितना इधर से आ रहा है उतना इधर से जा रहा है, ये बोला हुआ है। द स्केल रीडिंग W विल बी इन न्यूटन, है ना, जो रीडिंग है, जो आपके पास यहाँ पे स्केल दिख रहा है आपको, जिसमें आपके पास ये सिस्टम रखा हुआ है, उसकी रीडिंग क्या होगी, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है ना, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है आपसे। चलिए बताइए भाई कितना आ रहा है आपका आंसर। बताइए किसका आंसर आ रहा है। सबसे पहले तो ये बताओ कि जो
वेट मेजर करने वाला जो मशीन होता है ना, जो रीडिंग मशीन होता है, जो वेट मेजर करता है, वो एक्चुअली में क्या रीड करता है? जो वेट मेजर करने वाला जो मशीन होता है वो एक्चुअल में क्या रीड करता है? एक्चुअल में क्या रीड करता है वेट मेजर करने वाला मशीन? सो वेट मेजर करने वाला जो मशीन है वो एक्चुअली में आपके पास नेट डाउनवर्ड फोर्स को मेजर करता है। नेट डाउनवर्ड फोर्स, यस, आप टोटल रिएक्शन भी बोल सकते हो, आप टोटल रिएक्शन भी बोल सकते हो, या फिर मैं बोल सकता हूं नेट डाउनवर्ड फोर्स, दैट आई ऑल्सो से, राइट। चलिए अब यहां पे देखो भाई, यहां पे देखिए, तो यहां से अगर मैं बोलूं द रीडिंग ऑफ स्केल, द रीडिंग ऑफ स्केल is equal to, we can say the reading of the scale, we can say this is the net downward force, net downward force, net downward force, right, this is the reading of the scale, net downward force, या फिर आप जो बोल रहे हैं ना टोटल रिएक्शन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है, पहले तो आपके पास यार यहाँ पे टैंक का ही वेट आपको क्वेश्चन में दे दिया है, तो जो टैंक का वेट होगा वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो टैंक का वेट आ जाएगा प्लस। अब आप मुझे ये बताओ कि भाई ये टैंक में खाली जब है तब तो 500 न्यूटन है, अब उसमें आप पानी भर दिए हो तो पानी का वेट भी आ जाएगा, मतलब आपके पास यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ वेट, किसका वेट? पानी का वेट, प्लस और क्या हो जाएगा? अब आप मेरे को ये बताओ, क्या वाई डायरेक्शन में यहाँ पे आपके पास मोमेंटम चेंज आपको दिख रहा है क्या? यहां से जेट निकलेगा तो क्या उसका मोमेंटम चेंज होगा क्या? और जेट का अगर मोमेंटम चेंज होगा, जेट का अगर मोमेंटम चेंज होगा तो जेट में फोर्स आएगा, और इक्वल एंड अपोजिट आपके पास टैंक में भी आएगा, इक्वल एंड अपोजिट आपके पास किस में आएगा? टैंक में भी आएगा। क्या आप समझ रहे हैं क्या? है ना, इक्वल एंड अपोजिट आपके पास क्या आएगा? टैंक में आएगा। देखो वाई डायरेक्शन में आपके पास जेट का मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं होगा? वाई डायरेक्शन में आपके पास जो जेट है उस जेट का मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ सर, बिल्कुल मोमेंटम चेंज होगा, और मोमेंटम चेंज होगा, अगर जेट का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली जेट में फोर्स आएगा, और जितना फोर्स आपके पास जेट में आएगा उतना ही तो आपके पास ये जो सिस्टम आप देख रहे हो टैंक, उसमें भी तो उतना ही आपके पास आएगा, इक्वल एंड अपोजिट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रखर, प्रखर का आंसर मुझे सही लग रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसी के आसपास कुछ आता है, बाकी लोगों ने थोड़ा सा आंसर 6 वीक्स में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, चलो इधर देख लो। तो यहाँ पे आप देखो, तो दिस इज इक्वल टू, आई कैन से दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, वाई डायरेक्शन में मैंने बोला हुआ, तो दिस इज द एफ वाई डैश। अब देखो टैंक का वेट क्वेश्चन में दे दिया है, वाटर का आप वेट, जितना आपके पास वाटर उस टैंक में है वो आप निकाल सकते हो। फंसोगे थोड़ा सा एफ वाई डैश निकालने में, और इसमें भी आपको फंसने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एफ वाई डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास इनिशियल मोमेंटम रेट इन वाई डायरेक्शन, सॉरी, फाइनल मोमेंटम रेट इन वाई डायरेक्शन, फाइनल मोमेंटम रेट इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो जब भी आप मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो हमेशा सबसे पहले आप कंट्रोल वॉल्यूम ड्रॉ कर लिया करिए, है ना, कंट्रोल वॉल्यूम ड्रॉ कर लिया करो। देखो ये कंट्रोल वॉल्यूम आपका है, दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम, दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका कंट्रोल वॉल्यूम है। अब कंट्रोल वॉल्यूम है, कंट्रोल वॉल्यूम का इनलेट, ध्यान से सुनना, कंट्रोल वॉल्यूम का इनलेट है 1, कंट्रोल वॉल्यूम का इनलेट है 1, और कंट्रोल वॉल्यूम का एग्जिट यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज 2। अब यहाँ पे आप देखो, क्या मैंने बोला, इनिशियल मोमेंटम रेट का मतलब कंट्रोल वॉल्यूम का इनलेट, फाइनल का मतलब होता है कंट्रोल वॉल्यूम का एग्जिट। हमें वाई डायरेक्शन में देखना है, तो क्या इनिशियल मोमेंटम रेट वाई डायरेक्शन में है? क्या इनिशियल मोमेंटम रेट वाई डायरेक्शन में है या नहीं है? बोलो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस सर है, एंड दिस इज इक्वल टू, यार ये हो जाएगा आपका m.1, और ये हो गया v1y, ये हो जाएगा v1y। क्या फाइनल मोमेंटम रेट वाई डायरेक्शन में है? क्या फाइनल मोमेंटम रेट वाई डायरेक्शन में है? नो सर, फाइनल मोमेंटम रेट वाई डायरेक्शन में नहीं है। सो फाइनल मोमेंटम रेट वाई डायरेक्शन में नहीं है, तो ये हो जाएगा टर्म 0, सो दिस इज 0। ना यहां से मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा m.1 इंटू, अच्छा v1y किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज माइनस v1, वाई इट इज माइनस v1? बिकॉज इट इज इन निगेटिव वाई डायरेक्शन, दैट्स वाई इट इज माइनस v1, राइट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा माइनस m.1, और ये हो गया v1। ठीक है भाई, चलो अब देखो यहाँ पे, सो एफ वाई डैश इज इक्वल टू, यू कैन सिंपली राइट, क्या क्या आपको गिवन है क्वेश्चन में, जस्ट 1 मिनट ना, कंटेन 600 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, ये तो करेक्ट है।
अच्छा यहां पे आपको डायमीटर गिवन है, देखो हैव इक्वल डायमीटर, सो डायमीटर आपको दे दिया है जो कि आपके पास 6 सेंटीमीटर है, और वॉल्यूम फ्लो रेट आपको गिवन है, मतलब यहां से कितना वॉल्यूम फ्लो रेट हो रहा है ये गिवन है। सो दिस इज क्यू एंड दिस क्यू इज 300 मीटर क्यूब पर आवर, तो ये हो जाएगा 3600 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो 0 0 3 1 3 1 3 2 सो क्यू इज इक्वल टू 1/12 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सो यहां से आप देखोगे तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इस m.1 को मैं लिख सकता हूं, ये हो गया रो इंटू क्यू, डायरेक्टली मैं लिख देता हूं रो इंटू क्यू, और ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये हो जाएगा -v1, तो ये हो जाएगा माइनस, अच्छा v1 भी तो हमको निकालना पड़ेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लिख लेते हैं v1 को, v1 इज इक्वल टू दिस इज q बाई a के फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। तो यहां से आपके पास हो जाएगा, आई एम सॉरी, दिस इज इक्वल टू रो इंटू, ये हो गया क्यू स्क्वायर, रो इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हो गया a, और ये हो गया माइनस, ये माइनस। अच्छा ये बताओ माइनस साइन क्या शो कर रहा है दोस्त, यहाँ पे ये जो माइनस साइन आप देख रहे हो, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, एफ वाई डैश में माइनस साइन क्या शो कर रहा है दोस्त, एफ वाई डैश में माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो आप निकाल रहे हो एफ वाई डैश वो नीचे की तरफ लगेगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ये माइनस साइन बता रहा है कि नीचे की तरफ लगेगा। आप गए, आप समझ गए क्या, आप समझ गए क्या, जल्दी बताओ आप समझ गए क्या। ठीक है चलो, रो की वैल्यू, रो की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, वाटर ही था शायद यार, हाँ वाटर ही था, तो रो की वैल्यू अगर नहीं दिया है प्रॉब्लम में तो ये हो जाएगा 1000 इंटू क्यू की वैल्यू, ये हो गया 1/12, है ना, ये हो जाएगा 1/12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई राइट, डिवाइडेड बाई, ये हो गया एरिया, बताओ एरिया, एरिया कितना हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर, ये आपके पास एरिया हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर, और डी आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, दैट मीन 0.06 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। दिस इज द एफ वाई डैश, दिस इज द एफ वाई डैश। चलो एफ वाई डैश निकाल लो फटाफट, जल्दी बता दो एफ वाई डैश कितना आ रहा है, जल्दी से बता देना एफ वाई डैश कितना आ रहा है दोस्त, एफ वाई डैश कितना आ रहा है जल्दी बता दो, व्हाट इज द एफ वाई डैश, अरे कैलकुलेट करो एफ वाई डैश कितना आ रहा है, ये हो गया 1000 एक बटे, बता दो यहां से एफ वाई डैश कितना आ रहा है जल्दी से। एफ वाई डैश आ रहा होगा 2437, अच्छा 2456.095, ठीक है सभी का यही आ रहा है तो ठीक है, दिस इज 2456.098 किलो, किलो न्यूटन नहीं, न्यूटन में आ रहा होगा, सॉरी न्यूटन में आ रहा होगा, ये न्यूटन में आ रहा होगा, ये आपके पास आ गया एफ वाई डैश। ठीक है, माइनस साइन क्या शो कर रहा था मैंने बता दिया, इट शोज कि भाई डाउनवर्ड है। अब चलो, अब आपको वाटर, अब तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको स्केल की रीडिंग बतानी है, तो रीडिंग ऑफ स्केल, रीडिंग, एंड दिस इज इक्वल टू, ठीक है, टैंक का वेट कितना था, टैंक का वेट 500 न्यूटन, ये हो गया 500 न्यूटन प्लस 500 न्यूटन प्लस, अच्छा अब आप मुझे बता दो, अब आप मुझे बता दो, अच्छा वाटर का वेट कितना हो जाएगा, तो वेट डेंसिटी ऑफ द वाटर, तो रो जी, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू, ये हो गया 9.81 इंटू रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपको गिवन है दैट इज 600 लीटर, कन्वर्ट कर लेना इसको, है ना, तो ये हो जाएगा 600 इंटू, ये हो जाएगा 10⁻³ राइट, ये हो जाएगा राइट। सो ये हो गया गामा इंटू वॉल्यूम, ठीक है, वेट निकल गया प्लस, और ये हो जाएगा 2456.098 राइट, 10⁻, ये चला जाएगा, यहां से मुझे आप बता देना रीडिंग कितना आ रहा है न्यूटन में। थ्री थ्री फोर टू 3342.09, सॉरी 8842.09, सॉरी 8842.094, 8842.09 न्यूटन, एंड दिस इज द रीडिंग, ये आपके पास रीडिंग है।
right? This is the reading. Okay, fine. Is it clear? Good morning, all of you. So please type in the chat box. अभी voice आया क्या? Good morning, all of you. Yeah. Okay, fine. So let us continue. Basically, okay. So I think from Sandeep sir's also some questions are there still. So okay, I think these are the same questions that we kept. Okay, fine, no issue. So good. So let us talk about this. So theoretical question, I thought of putting one MSQ. Which one or more of the following statements is or are false regarding bulk modulus of elasticity and compressibility? So what do you know actually by elasticity, bulk modulus of elasticity and compressibility? So basically in compressibility there are two types, you know. One thing is isothermal compressibility and the other is actually adiabatic compressibility. But when we are dealing with compressibility in fluid mechanics, we assume that there is no heat transfer. That's why we are talking about adiabatic compressibilities in general. Okay, so that's why if you see, compressibility is equal to, of course, 1 by this bulk modulus, and this is adiabatic compressibility is what we are talking. So in fluid mechanics we just say this is this is normal compressibility because हम you know temperature का effects न लेते हैं, ठीक है. And K क्या होता है? Bulk modulus is nothing but minus dP by dV by V. Okay, and this is adiabatic bulk modulus. So now if you see, look, they are asking you which one or more of the following statements is or are false regarding bulk modulus of elasticity and compressibility. So bulk modulus of liquid is larger than that of solid actually. Okay, so basically if you take liquids and solids, liquid and solid, now out of these two things which will be more rigid actually? So please tell me. लेट अस सपोज अगर हमने अब प्रेशर डिफरेंस अप्लाई किया तो इन दोनों में किसी में थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम चेंज आते हैं. सो प्लीज टेल मी दिस. If delta P is same in both the cases, if delta P is same for same volume of substance, for same initial volume of substance, for same initial volume of substance, then definitely हमको पता है कि delta V of solid will be less than delta V of liquid. Yes or no? Correct? Because in solids molecules are very compactly packed, so that's why if you see delta V, the change in the volume of the solid will be less than the change in volume of the liquid. Correct? We know this. Okay, so practically if you see, if delta P and V is same, if delta V is more, if delta EV is more, that means this implies this bulk modulus K is less. Correct? Sorry, bulk modulus I think I have denoted both with K. Okay, fine. Compressibility and K actually here. So now if you see, K is less. Yes or no? Correct? Because if delta V is more, then definitely for same delta P and V, this total value will decrease. Okay, so K is less means bulk modulus is less for liquids. Okay, so bulk modulus is less for liquids, and since this compressibility is inverse of bulk modulus, that means beta is more for liquids. Correct? So compressibility is actually more for liquids. So basically this is from your simple understanding of some school level physics. So clearly if you can understand this, basically delta P and V, if they are same, means if you take same amount of volume of solid and a liquid, and if you apply same pressure difference on them, then definitely liquid tries to get compressed a bit more. Okay, so that's why these two statements are correct. Okay, so basically K of solid is greater than K of liquid, and at the same time
So this implies beta of solid will be less than beta of liquid. Clear? So this is beta of liquid. Okay, so now let us see the options. So bulk modulus has to be high for solids. So bulk modulus of a liquid is larger. So this statement is actually a false statement. So that's why this is a correct answer. Okay, because here they have asked which are the false statements. Okay, so this word has to be very careful. लगता है कि हमको ये option correct था, so इसलिए you will skip this option and mark the correct options, but you have to read the question little carefully. Okay, fine. So will you cover topics like Reynolds transport theorem, all these things? Yes, for past 2-3 days we are doing Abhishek, and today also we'll solve some questions on Reynolds transport theorem, all this Navier-Stokes equation and bluff bodies, everything. Okay, now compressibility of a liquid is larger than that of a solid. Okay, so basically if you see, compressibility of liquid is larger than that of solid. So this is actually correct statement, but you should not choose this because they are asking for false statements. Bulk modulus of a solid is larger than that of liquid. This is actually correct statement, but you should not choose this. Okay, so compressibility of a solid is larger than that of liquid. No, this is false statement actually. So this statement has to be marked. Okay, so basically from simple understanding of volume changes, you can easily identify which compressibility, which substance or which phase of matter has actually high bulk modulus and high compressibilities. Okay, clear? Fine. So is this clear to all of you? Type in the chat box. Yes, I'm happy that many of you have typed correct answer. Great. So shall we continue? Let's continue basically. So this is one question. The lever in the image has a weight W. So basically आपके पास एक lever है, आपके पास एक lever है, इस lever में एक weight था W. Okay, at one end is tied to a cylinder at the left end. So यहाँ एक cylinder भी है. The cylinder has negligible weight and buoyancy. Okay, so cylinder thoda chota cylinder, so that's why if you see there is buoyancy can be neglected, and slides upward through a film of heavy oil of viscosity mu. Okay, so basically in this gap you have some oil, high viscous oil actually. Okay, so here in this case you have some high viscous oil. Okay, so this is high viscous oil of density mu. Okay, so it's a high viscous oil. So practically speaking, if viscosity is very high, then the movement of the cylinder inside the oil will be very slow, correct? Because if viscosity is very high, then the viscous forces acting on the block will be very high, so the block will actually come up very slowly actually. Okay, now if you see, this is a cylinder of diameter d, length L, in an oil film of thickness delta R. So this is an oil film of thickness delta R actually here. Okay, so this is delta R. Now if you see this, okay, continue to next slide. Fine, I'll continue. If there is no acceleration, uniform lever rotation. So basically if you see, if there is no acceleration, this lever is rotating uniformly. So if this lever is rotating uniformly, then what happens? They have a formula for the rate of fall V2. So what is the expression for V2? Okay, so V2 का expression क्या है? They have an expression for the fall of weight V2. Neglect the lever weight, assume a linear velocity profile in the oil film. Okay, so oil film actually. Okay, is oil film में is gap, whatever is this delta, this is very very small, so we can assume a linear velocity variation here. Okay, so how to solve this question? Basically हमको V2 का एक function चाहिए, correct? So now if you see, for example, अगर if this is the initial position of the lever, okay, initial position of the lever, and यहाँ हमारा pivot है. Okay, now think that because of the weight and this block, the lever got rotated slightly. Okay, so let us suppose the lever which is like this, it got slightly rotated. Okay, so whenever the lever got rotated, then in that case the new configuration of the lever will be something like this. Okay, so this is the new configuration of the lever, correct? So basically this will take some small circular arc, so we can assume that to be a straight line because the rotation is very small is what we are assuming. So if this is basically here and this is the case. Okay, so now if you see, try to understand one thing. This point is at a distance of, these 2 points are at some distance. Okay, this distance is how much? This is L1 and this is L2. Okay, so basically here you have L1 and this is L2. Okay, so this value is L2, this value is L2. Now basically the lever is rotating at some uniform velocity in this clockwise rotation, so this is rotating at some uniform angular velocity. So if angular velocity is same,
angular velocity is equal to, let us suppose here if this is coming down with a velocity of v1, okay, so let us suppose here this block is coming down at a velocity of v1, linear velocity is v1 for example, then definitely here this goes up with a velocity v2, correct? This goes up with a velocity v2. Now what we can write for the expression, firstly omega is fixed, so omega is v is equal to r times of omega, okay, so v is equal to r times of omega, so v1 divided by L1, L2, okay, v1 divided by L2, okay, so they have given this is v1, right? Okay, that is v2, fine, okay, so in this case this is v1, this is v2, let us say for example, okay, so v1 and v2. Now v2 velocity is what you have to find, so v1 by L1 is equal to v2 by L2, so v2 is equal to v1 times of L2 by L1, correct? So this is from simple lever rule, okay, so from simple lever rule we can identify that v2 is equal to v1 times of L2 by L1, correct? So it is clear till this point. Now if you see this location here, if this is moving up at a velocity v1, look, try to observe carefully here, tell me one thing, if this is moving up at a velocity v1, if this end is moving up at a velocity v1, then definitely this block should also move at the same velocity v1, correct? The block should also move up at same velocity v1 actually, okay. So now if you see, they have asked the lever in the cylinder image has a weight w, the lever in the image has a weight w at one end and it is tied to a cylinder at the left end. The cylinder has negligible weight and buoyancy and slides upward through a film of heavy oil. Now try to understand this. If you see the force which is acting here, okay, so basically instead of velocities we can also write this is basically from angular velocity, okay, but if sigma torque has to be 0, this implies whatever is the momentum that is generated here, look, because of the weight there is some force that is acting at this location F2 and this is F1, so there is some force which is acting here, so F1 and this is F2 also, correct, okay. So what is F2? Weight of the block, okay, so F2 into L2 is has to be balanced by this string which is tied here, so this is string actually, so if this is actually a string because it is tied by a cable, correct, so there is a cable here, so basically if you see cylinder has negligible weight, so if there is a cable then whenever this block is trying to pull, this cable will be in tension, so this tries to, just a minute, yeah, so basically if you see this cable will try to pull it down actually, okay, and here also this is the weight which is acting here, okay, because in this string there will be tension, so the string will be trying to apply some force like this, okay. So now if you see under these effects the momentum means F1 times of, so F1 will be in the opposite direction of course, the tension due to the cable that is present, so this is F1, so F1 into L1 is equal to F2 into L2, correct, so this is what we need. So F1 into L1 is equal to F2 into L2, so F1 is equal to F2 times of L2 by L1, okay. So what is F2 actually? The weight which is acting here, so W, okay, so the weight which is kept there is W, correct, so they have kept a weight of W, so W times of L2 by L1, correct. Now what is this L2 by L1, okay, so what is this F1 actually here? So F1 is equal to F1 is equal to, okay, so F1 is equal to, so basically this F1 in this string, so if there is tension, this is slowly coming up, okay, with a velocity v1, okay, so because of this force application F1, this cylinder is slowly coming up at velocity v1. So what is the force? Force is equal to F1 is equal to basically shear stress acting into area of contact. So what is the area of contact of this cylinder? Pi d into L is the total area of fluid solid contact, so pi dl is the total area of the cylinder which is in contact with the fluid, so pi dl is what you have here, okay, so this is pi dl. And what about shear stress? Dynamic viscosity into velocity variation, so within a small velocity variation, within a small gap of delta r, here at this point the velocity is 0 because of no slip condition, but this level is moving at a velocity v1, so this is v1 divided by delta r actually, okay, so v1 divided by delta r times pi dl, okay, so this is what we have for the expression, okay, so this implies this F1 is actually equal to mu v1 delta r into pi dl, okay,
So this is the expression for F1. Okay, so once you know F1, what could be written here? F1 is equal to W times of L2 by L1. So L2 by L1 is equal to, what are the final answers? Final answers are in terms of these quantities. Okay, so velocity V1 can be written as V1 is equal to V2 times L1 by L2. From these expressions, let us try to eliminate these velocities. So V1 is equal to V2 times of L1 by L2 actually here. And what about V2? Actual velocity here, V2 is given, right? So V2 is given in the question. Okay, we want expression for V2 only, fine. Okay, so V2 is equal to V1 times of L2 by L1. So what is V1 actually? This can be written as V2 is equal to V1 from this expression, if you write F1 times delta R divided by mu pi dl, correct? So mu pi dl actually here, so mu pi d L1, correct? So pi d into length of the cylinder is L actually. So F1 into delta R divided by mu pi dl is what you have for V1 into L2 by L1. So what is this F1 from the lever arm? Actually from this principle, F1 is nothing but W times of L2 by L1. So V2 is equal to W times of this delta R divided by pi mu dl into L2 by L1 whole square. So this is the actual expression for the calculation of this velocity at the second block. Okay, means basically the block falling velocity is actually given by this W times of delta R by pi mu dl into L2 by L1 whole square. Clear? So that's how we can get this correct answer. Hydraulic machines is not in XC syllabus. So tension के कारण torque नहीं आएगा क्या? Actually torque comes, but the net torque acting, okay, the net torque that is acting is 0. Okay, because the lever is moving with uniform angular velocity, so sigma tau has to be 0. Okay, so net torque acting on this particular lever is actually 0. Clear? So that's how we can actually, by taking some simple lever principle and then by some force balance and just from Newton's law of viscosity, using all these concepts of simple engineering mechanics and fluid mechanics, we can actually solve this question. Okay, so W times delta R by pi mu dl into L2 by L1 whole square. So if you check W into, first of all, this L1 by L2 square roots is wrong. So L2 by L1 square in both the terms. W into delta R by pi mu dl. Option D is actually the correct answer in this case. Okay, fine. I need answer of question. Can I type the question? Yeah, definitely you can type the question, Ankit, no issue. But did you all get this? Option D, because it is basically from the simple lever principle. Okay, fine. So this is actually the lever. So because of this weights, there is some small rotation and the cylinder is actually lifting. So because of the spring present, there is some tension on this lever. So once if you apply the free body diagram, you can easily get the answer. Okay. A pitot static probe can often be seen protruding from the underside of an airplane. As the airplane flies, the probe measures relative wind speed, of course. Is this a Lagrangian or an Euler measurement? That is basically based on Lagrangian measurement. Okay, because if you see point to point, it actually measures the velocities. Okay, it's not like the continuous thing that we have. And because normally in Euler analysis, we actually fix a section. Okay, so but in actual case of pitot tubes and all, what happens? The position continuously changes. Okay, it's like tracing of the particle. So that's why it is Lagrangian approach. Okay. Now, if you see, this is the case. So let's go for the next question. So there is some question. Two immiscible Newtonian liquids flow steadily between two large parallel plates under the influence of an applied pressure gradient. Okay, so basically, if you see, there is okay, diagram is given, good. So there is two layers of liquid, liquid 1 and liquid 2, and this is the interface. Okay. Now let us see what they are telling you. Between two large parallel plates under the influence of applied pressure. The lower plate is fixed while the upper one is pulled with a constant velocity of u is equal to 10 meters per second. So the bottom plate is actually fixed. Bottom plate is actually fixed. Now what about the upper plate? This is moving at some 10 meters per second velocity. Okay. Then the thickness h of each layer of the fluid is 0.5 meters. So basically this thickness of the fluid film is same. H is equal to 0.5 meters. This is taken as origin and this is h is equal to 0.5 meters. Okay, fine. Then obviously this will be y is equal to minus 0.5 meters and this is y is equal to plus 0.5 meters. Okay. Then let us check. The velocity profile for each layer is given by, for the lower fluid, minus 0.5 less than y less than 0. So this is for the lower fluid. V1 is equal to 6 plus ay. V1 is equal to 6 plus ay plus 6 plus ay
6 plus ay minus 3y square. Okay, so 6 plus ay minus 3y square. So basically this is minus 3y square. And what about v2? v2 is equal to b plus cy minus 9y square. So b plus cy minus 9y square. Okay, so these are the velocity variations in the lower and upper half of the fluids. Okay, so now if where ABC are constants, the ratio of force on the top plate to the force on the bottom plate is, if mu1 is equal to 10 power minus 3 Pascal second, mu2 is equal to 2 into 10 power minus 3, and each plate has surface area of 4 meter square. Okay, so they are asking you ratio of the force on the top plate to the force on the bottom plate. So basically if you see, they want this ratio, force acting on the top plate divided by force acting on the bottom plate. So basically how do you get the force acting on the top plate? Shear stress acting on the top plate into area of the top plate divided by shear stress acting on the bottom plate into area of the bottom plate, correct? But it is given that both these plates have same area, clear? So if you see carefully, each plate has a surface area of 4 meter square. So basically if you see, this two terms gets cancelled. Okay, so this is equal to, now tau by t, but basically shear stress acting on the top plate is nothing but mu into mu of the top fluid into the velocity gradient. Of course, if you assume small gap, du by dy at y is equal to 0.5. Okay, this divided by mu of the bottom fluid into du by dy at y is equal to minus 0.5, because this is at the bottom, meters of course. Okay, this is meters. So this is what you want. Now if you see this, ft by fb is equal to top force by bottom force is equal to mu of the top fluid. Okay, so what is this top fluid? Basically this is 1 and this is 2. So top fluid is 1, so 10 power minus 3 into du by dy. So what is this upper velocity for this? Okay, so basically if you see v2, so out of these two, this is the location of the upper half, so this is the velocity variation. So basically this is for the top and this is for the bottom velocity profiles. Okay, now if you see du by dy of the top fluid, so top is this, so if you calculate du by dy, c minus 18y, correct, c minus 18y at y is equal to 0.5 meters divided by the bottom fluid. Okay, so what is bottom fluid? Dynamic viscosity 2 into 10 power minus 3, correct? So 2 into 10 power minus 3 into du by dy of the bottom case. Du by dy is a minus 6y, a minus 6y actually here, a minus 6y at y is equal to minus 0.5 meters. Okay, so at y is equal to minus 0.5 meters. So if you simplify a bit, 10 power minus 3 and 10 power minus 3 gets cancelled. So top acting on the top divided by force acting on the bottom plates is equal to 1 by 2 times of, when you put y is equal to 0.5, this is c minus 9 divided by, when you put y equal to minus 0.5, this is a plus 3. So this is the ratio. Now to get this ratio, we need to actually find out two constants. What are they? We need constant values a and c actually here, correct? So how to calculate these constants a and c? We can write some boundary conditions actually. Okay, so basically we know one thing, v2 at y is equal to 0.5 meters is 10. Okay, so this is 10 meters per second. Similarly this v1 at y is equal to minus 0.5 meters is equal to again 0, because this plate is fixed, 0 meters per second. And also we can write one more boundary condition, at this interface, if this interface is moving at uniform velocity, means basically if this interface is moving at uniform velocity, then what happens? The shear stress acting on this in this direction and this in the bottom direction, both should be same, correct? So at this interface, tau, because of the top fluid at y is equal to 0, is same as tau at bottom fluid at y is equal to 0, correct? Means basically if this layer has to move with uniform velocity, the net force acting on that layer should be same. Okay, so that means whatever is the shear stress or whatever is the force that is applied by the top layer at this location is same as the shear force applied by the bottom fluid on this layer in the reverse direction. Okay, so these two has to be numerically the same. So tau at a t at y is equal to 0 is equal to tau due to bottom fluid at y is equal to 0. Okay, now what is this variation? Mu t into, for the top fluid, what is the velocity variation? For the top fluid, what is velocity variation? For the top fluid, c minus 18y, correct? So c minus 18y actually here, c minus 18y at y is equal to 0.
So this is equal to mu of the bottom fluid into. So what is this du by dy for this bottom fluid? For the bottom fluid, A minus 6y. Okay. Excuse me. So A minus 6y. Okay. So this is A minus 6y at y is equal to 0 actually. Okay. So if you put y is equal to 0, then one thing is very clear. This top fluid and bottom fluids, if you see, mu1 is only 10 power minus 3. So mu1 is that. So top fluid has dynamic viscosity which is half of the this bottom fluid. Okay. So now this is 2 actually. Bottom is of 2 into 10 power minus 3. So this implies when you put y equal to 0, C is equal to 2 times of A actually here. Okay. So C is equal to 2 times of A is what you can identify from this simple force analysis. Okay. Can you please Fs direction again? Yes. Basically, if this plate is moving, the velocity layers here are moving at high velocity, so they will try to pull this layer. Okay. So the shear stress acting on this layer due to top fluid will be in the rightward direction, because this layer will be tried to pull by the fluid on the top in the right side direction. Okay. Similarly, the bottom fluid will try to stop it. So these are the shear force directions that are acting on the intermediate fluid interface layer. Clear? Yes or no? So please type in the chat box. Is this clear to you? Fine. So let's go for the thing. So C is equal to 2A. But what is the value of C actually, or what is the value of A? Better to calculate A. V1 at y is equal to minus 0.5 is 0. So if you put y is equal to 0.5 here, 6 plus A into minus 0.5 minus 3 times of 0.5 square is equal to 0. So यहाँ से हम A का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. So A times of minus 0.5 is equal to 3 times of 0.5 square minus 6. Okay. So from this, what is the value of A actually? 3 times of 0.5 whole square. Let me take this calculator. Okay, so calculator is not here again today. Gate calculator is not there. Fine. I think I cannot type today also. Okay. So basically, I think you have to confirm the calculation. 3 times of, or 6 minus 3 times of 0.25 divided by 0.5. Okay, so this is what you have. So please type in the chat box what is the answer for this. What is the value of A actually? 6 minus 3 times of 0.5 whole square divided by 0.5. Correct? Because of this minus, I have swapped these two. So if you cancel 0.5, this will show you 12 and this will become 0.5 actually. Okay, so 12 minus 1.5. So 12 minus 1.5. So 10.5. What are the units? Meters per second. So 1 by second is the units. Correct? So A is equal to 10.5. Correct? Yes or no? A is 10.5. Correct? So 10.5, because 12 minus 1.5 gives 10.5. So this is equal to half times of C. What is C? C is actually 2 times of A. Correct? This is what we identified. So basically C value is 21. 21 minus 9 divided by 10.5 plus 3 is what you have here. Okay. So 1 by 2 times of 21 minus 9 is actually how much? 12 divided by 13.5. So please calculate this. This is the correct answer actually. Okay, whatever you are going to get here, this is actually the correct answer. Here, sorry, on the taskbar here, what should I do? Right click and hold. If I get, no, I think this is something different. Okay, okay, na? Fine. So please calculate this value. Okay, so please calculate this value and confirm me. What is the value here? 2 is anyhow 6. 6 by 3.5. Okay, so what is this 6 by 3.5? So please type in the chat box. 0.44 na? So okay, 0.44 is the correct answer in that case. Clear? Did you all understand what I am doing here? Basically, I have equated the this shear stress to get this condition. Okay, C is equal to 2A actually here. Clear? So 0.44 is actually the correct answer for this particular question. Okay, yeah, all of you are getting 0.44. correct? Option nahi hai. I think maybe inverse is given. Okay, so 1 by 0.44 you do. Maybe options are given in reciprocal, because doing framing of this question something can happen. 1 by 0.44 you do, and tell me what is coming. 1 by 0.44. So please do 1 by 0.44, reciprocate the value. Option C na 2.257. Okay, so maybe because look here we have taken direct values, but they might have calculated some
intermediate values here. Okay, so basically they might have calculated some things like at this locations, or at this locations they might have found shear stress and all these things, so values could slightly change. Okay, so 2.27, so 2.33, so this can be taken as the correct answer if you round off 2.27. Okay, something near to this. Okay, but clearly one thing is very clear, shear stress at the bottom will be very high. Okay, so whenever you are doing by top to bottom, the value will be generally less only. Okay, less than 1. Okay, because the wall shear stress will be very large actually. Okay, in actual practice also, that's why since the wall shear stress is very high, it is very much capable of stopping the fluid layer. Okay, so normally this tau t is actually very tau at the bottom is actually very large, the wall shear stress will be large actually. Okay, so that's why tau t means the top by bottom will be always less than 1 actually. Okay, y limits changed hai shayad. Okay, fine, y limits got changed. How come? These are the y limits, no? This is the origin they have given you in the question. Okay, so that's why 2.27 is actually the correct answer. Fine, so this interface has to be done because area is same on both the cases. Okay, C is correct answer. Okay, so at y is equal to 0 both velocities are equal, na sir? At y is equal to 0 both velocities are not equal, because y is equal to 0 here if you see, yes, basically the velocity at this location and at this location both can be same. Yes, correct. Fine. Okay, so du by dy, anyhow if you see, normally instead of putting du by dy you might write v by this value 0.5. Yes, correct. At this interface both the velocities are equal. Okay, means if you put y is equal to 0 in this equation, if you put y is equal to 0 in this equation, 6 is equal to b is what you will get. Okay, but we don't need b because we didn't find b anywhere, that's why I did not do that. I went by the shear stress methods. Okay, Molly, basically if I do this analysis now, if I put y equal to 0 in these equations, I'll get b equal to 6, but actually we know don't need any value of b in this analysis. Okay, did you understand this? That's why I did not equate the velocities actually. Okay, I have equated shear stress because my interest is something different in this question. Okay, yeah, this is the question, of course, that's what someone is asking to display. Fine. Okay, so a simple question actually, only some little analysis up to here. We have written the given data and we have done some 2-3 steps analysis here, then to get the conditions we have done some calculation, that's it. Okay, now see this question, let us see this question. To find here, finding b will be easy, sir. Okay, basically rather than this shear stress, I think you can keep this 0. Okay, whatever might be the different conditions, you have some boundary conditions, it's okay, no issue, but like if normally if you have some boundary conditions, your aim is to get the constants, that's it. Okay, normally you can follow any mathematical procedures to get the constants. Okay, when you have the boundary conditions, eliminating and solving for the boundary for the constants is purely mathematical techniques, that whatever you want. Okay, you can equate velocities or you can equate shear stress, whatever it is, it will be fine. Velocities will be equal now, because if you see from the top velocity profile, look, there should be some continuity of velocity here, understood? So there should be some continuity of velocity, means whatever is the velocity here, same should be the velocity at the top point. Okay, look, I am not telling about these 2 points. Okay, at this interface, if you see whatever is the velocity of the layer just below this is the same velocity of the layer slightly above this. Okay, so that's why we are equating the velocities actually. Clear? Means basically for this velocity profile, if you put y is equal to 0, what is the answer you are getting? Same velocity is what you will get for this velocity profile also at y is equal to 0. Okay, y is, Rajesh, keep one thing in mind, y equal to 0 is not this. Okay, y equal to 0 is this. Fine, yes or no? So please type in the chat box. Clear? Y is equal to 0 is the midline. Okay, so whatever might be the velocity profile at y is equal to 0, from both the sides the function should show same velocity. Clear? Shear stress can be same actually, no? Because if you see v by tau is equal to, here it is v by y, but here it is 10 minus v by 0.5. Okay, and dynamic viscosities are different, so basically, clear? Look, dynamic viscosities are different and velocity gradients can also be different. Okay, because it is not v minus 0 again, it is 10 minus v. Okay, that's why, that's the reason. Fine, so now let us go for the next question. So let us see this question. A 73 mm diameter aluminium, okay, so there is some aluminium of 2.64, specific gravity 2.64 piston. Okay, so basically this is a aluminium piston, so there is some aluminium piston here, length
resides in a stationary 75 mm inner diameter steel tube lined with SAE 10W30 oil, okay, at 25 degrees Celsius. It is not 250, 25 degrees Celsius, but whatever it is, dynamic viscosity is directly given. A mass of 2 kgs is suspended from the free end of the piston. The piston is set into motion by cutting the support cord. So basically, if you cut the support cord, then what happens? If you cut the support cord, then because of this weight, the piston will try to slide down smoothly. Assume a linear velocity profile within the oil. The terminal velocity of the mass is dash meters per second. Okay, so let us suppose if you cut this cord, then what happens? Because of this weight, this piston will try to slide down slowly. Okay, so they are telling you what is the terminal velocity of the mass m. Okay, so now tell me one thing. First of all, before going for some mathematical analysis, look, let us suppose if piston is coming down. Okay, if this block is coming down at some velocity v, what will be the velocity of the piston? Let us suppose if this is a tight cable or something, then let us suppose if this is coming out at mass at velocity v, what could be the velocity of the piston? What could be the velocity of the piston? Same velocity, na? Correct? Same velocity, right? Whatever is the velocity at this location, same is the velocity at this location. Okay, so if piston is coming down at v velocity, this mass will also come down at v velocity. So one thing is clear, the force that is acting here is how much? Mg is the force that is acting, okay, because of the mass directly attached. So Mg is the mass which is attached here, and here there is some viscous effects acting on the cylinder. Okay, now if you draw the free body diagram of the piston, sorry, okay, excuse me. Noida is actually very cold. In the nights after going from the class, the temperatures outside are very low actually, so that's why I got cold. So sorry for the sneezes midway. Okay, that's what I want to tell you. So now if you see, there is a piston wall, and there is a clearance. Okay, so you've got some clearance. Now, yeah, this is North India, of course. So see here, if you see, this is subjected to some forces. Okay, so this is acted upon by some force like this, which is weight of the mass mg. Okay, so there is some weight of the mass mg. Now if you see, all over the 360 degrees of the disc of the cylinder, there is some viscous effects. Okay, so there is some viscous effects on all the 360 degrees because this is a piston, so it is actually surrounded by 360 degrees with oil. Okay, now if this has to move with uniform velocity vt, then for uniform velocity of the piston or for uniform motion of the piston, sigma f acting on the piston in y direction has to be 0. Correct? Only in such case the block will try to move at uniform velocity. Okay, now sigma fy is equal to 0. So what is sigma fy? Motion is in this direction, so mg minus viscous force has to be 0. So basically whatever is the weight that you have, this should be equal to the viscous force. So what is viscous force? Shear stress into the shear area. So what is shear area? Basically the complete piston is inside the oil, so that's why pi d into L is actually the total surface area that is in contact with the oil. Correct? So basically if you see, the total surrounding area, the total surface, the lateral surface area of this piston is in contact with the fluid, so this shear area is actually pi dl, diameter of the piston into length. So mg is equal to, now what is shear stress? Mu into velocity gradient. So what is velocity gradient? Basically if this is clearance, then within this small gap the velocity variation is actually linear. Correct? So the velocity variation is linear. So basically at this location the velocity slowly increases. Okay, so the velocity slowly increases. Now if you see, this is 0, and here by the time it comes to the velocity of the piston, and this gap whatever you have is this clearance. Okay, so within this small clearance, this piston, this oil film is raising a velocity of 0 to v actually. So v minus 0 by c into pi dl is what you have here. Okay, so what is the expression for velocity? Mg into c by pi mu dl is what
you have for the expression for the velocity. Okay, so mg into c divided by pi mu into dl. So this is equal to mg. So what is mass of the block actually? What is mass of the block? They have given 73 mm diameter aluminum piston. So for aluminum, specific gravity is 2.64 and length 100 mm. Okay, so they have given this quantities. So basically mass can be written as density of the aluminum into volume of the cylinder, pi by 4 d square L is what you have, into clearance C divided by pi mu into diameter of the cylinder into L actually here. Okay, so now if you can cancel some things, L gets cancelled, this D gets cancelled, then pi also gets cancelled. Okay, so density of aluminum into diameter of the piston into clearance divided by mu, 4 is also there, 4 mu. Okay, so 4 times of mu is what you have. Now density of aluminum is known to you, dp is also known to you, clearance. So what is clearance? This inner diameter minus clearance is equal to inner diameter of the sleeve minus diameter of the piston divided by 2, correct? So di minus dp by 2. So why you haven't considered the buoyancy force in this problem? Because the fluid's density is not given to you, correct? So since the fluid density is not given to you, indirectly they told that the buoyancy force acting on the piston is very small. Okay, so that's why I did not consider the buoyancy force. Clear? So please type in the chat box. Is this clear to you? Fine. Vortex shading. So you want to know about vortex shading? Okay, I'll talk about it. Okay, fine. Turbulent flow is also there in syllabus a bit. Okay, so some empirical relations are there. Clear? What about external mass? Means this mass, correct? So this mass is only applying the force na mg towards bottom. Okay, I think mass of the cylinder I have missed. So mass of the piston has also to be written, correct? Weight of the piston should also be there, correct? Yes, weight of the piston should also be there. Weight of the piston should also be there here. So this is plus weight of the piston. So what is, okay, I have considered weight of the piston plus mg. Okay, so mass also should be there plus mg, right? So I think in this expression from here the formula changes slightly. Yes, correct. Weight of the piston is also there. Okay, so weight of the piston is also there because piston has some weight now, obviously. Okay, there is some weight of the piston also because piston is also having some mass. Okay, so weight of the piston plus due to this external mass. These are the two forces, correct? Because this piston has some density, so obviously the weight of the piston has to be considered. Okay, now if you see this is equal to V is equal to mg into c plus weight of the piston divided by this pi mu dl. Okay, so mg into c, mass of this block into g into clearance plus, okay, so I think this clearance has to be for the whole thing. Okay, now from here we will do the question again. Weight of the piston plus mg, so this term multiplied with c divided by pi mu dl. Okay, so this is the correct expression. Fine, because you know weight of the piston is also there. Okay, fine. Vortex shading is not actually in the syllabus of GATE, but I'll explain you what is vortex shading. What are the number of questions left? Okay, fine. So shall I tell you in the tomorrow session, because anyhow it is not in the XC syllabus, but actually I have to show you using the vortex profiles. Okay, means basically this streamlines in the vortex flow. Okay, so now let us for the time being continue with this question. Fine. Okay, so this is the case. So weight of the piston is nothing but density of the piston into pi by 4 d square L into z. This is weight of the piston plus this external mass times g into clearance divided by pi mu dl is what you have here. Okay, so these are the quantities and clearance is actually this quantity. Okay, so di, internal diameter of the sleeve, is how much? Resides in a 75 mm inner diameter. Okay, so this is 75 mm, piston diameter is 73 mm, so this is basically 1 mm. 1 mm. Okay, so c is 1 mm. So let us suppose if you substitute the values, density of the piston. So what is density of the piston? Specific gravity is 2.64, so 2640 is the density into pi by 4 into d square. So what is d diameter? 0.073 whole square into length of the piston. So what is length of the piston actually?
length of the piston is 100 mm length, so 100 mm means 10 centimeters, so 10 power minus 1, 0.1 meters, plus mass of the piston, mass of this external mass. Okay, so what is this external mass? 2 kgs is suspended, so 2 kgs, this whole value multiplied with gravity g 9.81 into clearance. So what is the value of clearance? 1 mm, so which is 10 power minus 3 meters. This complete value divided with pi mu dynamic viscosity is given to you 0.13 Newton second, so 0.13 into diameter is again 73, so 0.073 into length, so 0.1 actually. Okay, so length is 0.1, 100 mm, so 10 centimeters. So this answer is going to be in meters per second. Okay, so you have to perform this calculation a bit carefully. Final answer is what they are asking in meters per second. Okay, so please type in the chat box. So is this clear to you? 10 point, 10 point actually 10 point something, 10.216. All of you please confirm 10.22, correct? All of you are getting 10.22. This is the calculation that actually present. Okay, so the main idea here is this, getting this expression. Okay, so you should get this expression carefully. Fine. So 10.22 I am taking out from your value, so 10.216 or 10.22 whatever, that is actually the correct answer for this. Okay, so 10.22 meters per second. Okay, so let's go for the next question. This is anyhow Bernoulli's equation question, simple question. Let us solve some tough questions. Okay, so this I have solved in the Abhyas series. Anyhow, in mechanical you can find it there. This question we have solved actually. Okay, let us solve this potential flow question. Okay, so let us solve this potential flow question. Okay, so water is flowing radially outward in a horizontal plane from a source at strength of 12 meters per second square. Okay, so basically there is some horizontal plane and there is a source here, and water is flowing radially outward from the source. Water is flowing radially out from the source. Okay, now if you take any radius, for example, let us suppose if you take this at any radius, at a radius r, so let us suppose there is some radius r. Okay, now if you see the strength of the source is 12 meters square per second, the velocity of the flow at a radius of 0.4 meters is dash meters per second. So basically, strength of the source, strength is nothing but discharge per unit length of the source, correct? So discharge per unit length of the source, discharge per unit length of the source, so discharge per unit length of source. So m is equal to, what is discharge? Radial velocity into, the radial velocity is cutting this area, so 2 pi r into length. Okay, so length is anyhow 1, so because for unit length of the source is what we will take, this length is 1, so radial velocity at any given location is nothing but m by 2 pi r is what you will get actually. Okay, so this is equal to m by 2 pi r, so strength of the source is 12 divided by 2 into pi into, what is the radius they have given? 0.4 meters, right? So 0.4 meters. Okay, so if you simplify this, this is 6 by 0.4 times of pi, this is what you have actually. Okay, so this is in some meters per second, so this is the radial velocity at which it is crossing. 4.77 is what you are getting, all of you. 6 by 0.4 into pi is the correct answer. Okay, so 4.77 meters per second is the radial velocity of this flow at this location. Okay, so 4.77 meters per second, yes, correct. 4.77 meters per second is the actual value. Okay, so 4.77 meters per second is the correct value. Fine. Okay, so this is finally confirm me, this is what you have got, correct? If you evaluated this, then you got 4.77. yes, is this the value that all of you got? 6 by 0.4 into pi. Okay, 6 by 0.4 times of pi, correct? So please type in the chat box, this value is 4.77, correct? Okay, fine. So let us see one more question. Inviscid incompressible flow about a stationary cylinder in a uniform flow can be simulated by superposition of uniform flow and basically what? So I have told you, if you want to simulate the situation of flow past a stationary cylinder, so basically for flow past a stationary cylinder,
flow past a stationary cylinder. This simulation can be done by simulating a uniform flow plus a doublet, correct? Uniform flow plus doublet, okay. If you want to introduce rotation to this cylinder, then you should also put this vertex flows, okay. So vertex also you have to keep in the superposition, but right now this is a stationary cylinder is what they have asked. So for stationary cylinder you can superimpose a doublet with a uniform flow, and if this cylinder radius is a, for example, then the complex potential function for this case is uz plus u a square by z is the complex potential function, okay. So once you have the complex potential function, you can differentiate it, you can calculate the velocities, magnitude of velocities, whatever you want you can do, okay. So this is the complex potential function. Regarding the recordings of potential flow, I have talked to the people concerned today. Most probably they may get uploaded if they get the approval, okay. Now let us see one more question. The radial distance at which, okay, so basically if you see this, now if you see the velocity distribution for a fully developed lambda flow in a pipe, so basically this is expression for Hagen-Poiseuille flow. Hagen-Poiseuille flow, okay. So they are asking you at the radial distance from the pipe axis at which the local velocity equals the average velocity, okay. So A is the correct answer. Let us check basically. So the velocity profile u is given by minus r square by 4 mu into dp by dz or dp by dx in the flow direction, x is basically the flow direction, into 1 minus small r square by capital R square, okay. So they have given you what is the radius at which u is equal to u average, correct. This is what they are asking you, okay. So u at any location is equal to average velocity. So this average velocity is nothing but, in case of pipe flow, maximum velocity by 2. So this implies minus r square by 4 mu into minus dp by dx, okay, minus I have written here, so dp by dx into 1 minus small r square by capital R square is equal to, what is maximum velocity? Maximum velocity in a pipe occurs at r is equal to 0. So this term is the maximum velocity. So minus r square by 4 mu into minus dp by dx, okay, minus we have written, so dp by dx divided by 2, okay. So this is half of the maximum velocity. So r square by 4 mu, this pressure gradient, r square by 4 mu, this pressure gradient gets cancelled. So 1 minus small r square by capital R square is equal to 1 by 2, okay. So this implies small r by capital R whole square is equal to 1 by 2. So this implies small r is equal to capital R by square root of 2, okay. And this is the location at which local velocity and average velocity are equal. So small r is equal to capital R by 2, actually 1 by root 2, okay. So what is the value here? 1 by root 2. So this is not root 2, this is 1 by root 2, no, this is actually 1 by root 3, okay. 1 by root 3 is 0.577, this is not root 3. So option A is correct answer, of course, yes, okay, fine. Because how do I know the 1 by root 3 is 0.577? Normally in machine design, if you see, we will have the concept of discs, okay. Then for uniform pressure theory, the small d by capital D value is 1 by root 3 optimum value, okay. From that I actually take this thing. So I take some questions on pipe in series and parallel, okay. In tomorrow's lecture I'll try to put some parallel and series combination of pipes, okay, because today questions I think no series parallel combination, so tomorrow I'll keep them, fine. Then let us see few more questions. So anyhow, these questions, if you see, this is simply some, if you apply Bernoulli's equation at these two locations, you will get the answer directly, okay. So please apply these things, okay. I'm leaving some simple questions for you, okay, because I cannot cover each and every equation. Sir, वो Abhyas batch वाला cover दीजिए, okay. This Bayon's equation I will do that, okay. But this question is actually very simple, okay, because manometer deflection is given. If you apply Bernoulli's equation at these 2 points, you can get the pressure difference, okay. PA minus PB value is what they are asking you, okay. So please do this question. It's a very simple question. If you apply Bernoulli's equation, you can easily get this, okay, fine, okay, clear. So let's go for the next question directly. This question is what you are asking me. A uniform wooden beam of specific gravity 0.65 is 10 centimeters by 10 centimeters and by 3 meters, okay. So this length is actually 3 meters and the cross section is actually a square cross section with 3 by 3 centimeters, okay. So if you make a cut and if you see the cross section, if you make a cut here, for example, at any location, if you make a cut, then this is actually a square cross section, okay.
this is actually some square cross section like this. Okay, so it is actually some square cross section. This is 3 meters and this is also 3 meters. And this is 3 meters. Okay, so 3 meters and 3 meters. Now, it's hinged at A. So basically this is having some hinge at this location A. In the figure, the beam will float in the 20 degree Celsius water. So 20 degree Celsius means basically properties or density of water is around 1000 kg per meter cube. And dynamic viscosity, anyhow we don't need viscosity, no viscous suffix. So at an angle theta is dash in degrees. Okay, so here if you see, basically normally if you suspend, this is like a practical question. Okay, so let us suppose if you suspend a beam, okay, this is 10 centimeters by 10 centimeters. Okay, fine. Okay, so basically what happens, if you suspend a beam, then the beam will float at some angle, yes or no, correct? Let us suppose if you suspend a light body in water, then what happens, this beam will actually float at some angle. Okay, so discharge per unit width by 2 pi is strength of the source. No, actually if you have some source of some length, then per unit length what is the discharge that is coming out radially, that is actually the source. Okay, I mean strength of the source. Okay, Shubham. So now see here, so this is a practical question. So they are asking you what could be this angle theta that the beam makes with the horizontal. Okay, so if you see the beam, what is the angle made by this beam with the horizontal? Okay, so this is theta, of course. Okay, now if you see, if you draw the free body diagram of beam, for example, if you draw the free body diagram of beam, then in that case, look, try to understand carefully here. Here because of the hinge, you have some reaction forces Rx and Ry. Then you have some weight of the beam that is acting. You have some weight of the beam that is acting to the centroid of the beam. Okay, so weight of the beam is acting. Weight of the beam, and there is some buoyancy force also which is acting. Because why I have intentionally drawn buoyancy force little lower length, because the system is in fluid only to some part. Okay, so that's why this is actually to only half part. Okay, now therefore if you see, this is buoyancy due to water and this is weight of the beam. Okay, buoyancy F due to water. Okay, so buoyancy force due to water, fine, and this is weight of the beam. So these are the forces which are acting on the beam as of now. Okay, so under the effect of these forces, the beam is in equilibrium position. So if you take a O, actually if the beam is in equilibrium position, then the moment of all these forces about O has to be 0, correct? So if you see, for the beam to be in equilibrium, for the beam to be in equilibrium, for the beam to be in equilibrium, summation of moments about O, let us suppose if you take anti-clockwise positive, this has to be 0. Okay, now if you see carefully one thing, you have to identify certain distances here. Okay, so since these two forces are vertical, let us take a vertical line at this location. So now if you see, this angle made is theta and these angles are also present here. Okay, so we have to identify two distances, basically this distance about this axis, these two distances is what you have to identify. Okay, so this is center of buoyancy, this is center of gravity of the beam, and this is O anyhow. Okay, now what could be this distance is what you have to identify. So first of all, if you observe carefully, there is water level. Okay, there is water level on the beam, clear? So there is some water level on the beam and this height is given 1 actually. Okay, so if this angle is theta, this angle is also theta because they are vertically opposite angles. Okay, so if these are vertically opposite angles, if this is 1, then this length is actually 1 by sin theta, correct? So the length of the beam which is outside the fluid is actually 1 by sin theta, correct? Yes or no? Because if this is 1 and if this is sin theta, then 1 by sin theta length of the beam is actually outside the fluid. So that means this length is actually 3 minus 1 by sin theta. Okay, so this length of the beam is 3 minus 3 meters, right? They have given 3 meters, so this length is 3 minus 1 by sin theta. Now if you see this is 3 minus 1 by sin theta, then this length where the center of buoyancy acts is actually 3 minus 1 by sin theta by 2, correct? This is what is the length basically, because if this force, this total length of the beam which is inside the fluid is 3 minus 1 by sin theta, then this length which is along this is 3 minus 1 by sin theta by 2. Okay, now let us see one more thing. If total length of the beam is L, this is L by 2. So if this angle is theta, then this is L by 2 cos theta. Okay,
So L by 2 times cos theta is what the length, this dimension basically, okay, and this is 3 minus 1 by sin theta by 2. Now if you take the moments, what is this total remaining length actually? So this total remaining length is nothing but 3 plus 1 by sin theta by 2, correct? 3 plus 1 by sin theta by 2 is the upper half of the length actually, okay. So if this is 3 plus 1 by sin theta by 2, then this side is how much? 3 plus 1 by sin theta by 2 times cos theta, okay. So because hypotenuse length is 3 plus 1 by sin theta by 2, so if this angle with the horizontal is theta, if this angle with the horizontal is theta, then this is 3 plus 1 by sin theta by 2 into cos theta, okay. Now what are the different forces acting? Buoyancy force acting into, so buoyancy force in the clockwise direction, so let us keep minus buoyancy force acting due to water into the moment arm is 3 plus 1 by sin theta by 2 into cos theta, plus moment due to weight of the beam is nothing but weight of the beam into this dimension about this, this is producing anti-clockwise, so anyhow this is correct, and this is producing clockwise, so 3 plus 1 by sin theta by 2 cos theta, and this is L by 2 cos theta. So this expression is equal to 0 actually here, clear? So if this expression is 0, because force acting on the water is W, 3 plus 1 by sin theta by 2 into cos theta plus WB L by 2 cos theta is equal to 0. So if you cancel cos theta terms, then length of the beam is 3 meters anyhow, known to you, length of the beam is 3 meters. Now what is buoyancy force? Buoyancy force is equal to density of water into volume submerged in the fluid actually, okay. So what is the volume submerged in the fluid? This length is 3 minus 1 by sin theta and cross section is 0.1, so density into volume, so volume is 0.1 into 0.1 into 3 minus 1 by sin theta, so this amount of volume of the beam is submerged, so density into volume into gravity by 2, so this is what you have into 3 plus 1 by sin theta plus what is weight of the beam? Density of the beam material into volume of the beam, 0.1 into 0.1 into total 3 meters, okay. So this is the case, so density into volume into gravity into this is 3 by 2 is what you have here, so 3 by 2 is equal to 0. So we have one equation with one unknown, theta is what you have to find actually, so let us solve that, okay. So before that we can make some cancellations, G and G gets cancelled, 0.1, this 0.1 gets cancelled, 2 and 2 gets cancelled actually here, okay. So 2 and 2 gets cancelled, so now if you see minus density of water into 3 minus 1 by sin theta into 3 plus 1 by sin theta, so 9 minus 1 by sin square theta, correct, A minus B into A plus B, plus density of the body into 3 into 3, 9 actually, okay. So this is 0. Now if you see what is the specific gravity of the beam material, 0.65, okay. So this implies 9 minus 1 by sin square theta is equal to specific gravity 9 times of specific gravity of the material, correct. This is what you get because density of body by density of water, so 1 by sin square theta is equal to 9 times of 1 minus specific gravity of the beam actually, okay. So this is 1 minus specific gravity of the beam from this equation, so this implies sin square theta is equal to 1 by 9 times of 1 minus specific gravity, so specific gravity is given 0.65, so 1 minus 0.65 is 0.35, okay. So from this you can calculate the value of theta in degrees actually, okay. So please confirm me what is the value. So calculate sin square theta, then take a square root, there is no calculator, otherwise I might have shown you using calculator, okay. So in this apps do you have calculator anyway? No, these are Google apps, okay, fine. Okay, so I think you have to do the calculation by yourself. 34.3 is correct answer. Google Assistant use kare. Okay, let us try that also. But this is actually, as far as I know, we can have only this case, okay.
we can actually give only output from this board, we cannot take input. Okay, fine. Okay, so now if you see, so here if you long press, that's what you're asking. Okay, fine. So please do this calculation by yourself. Okay, so please do this calculation by yourself. So it's a simple calculation, 1 by 9.35, 1 by 9 times of 0.35. So if you get sin square theta, then take a square root of that and click sin inverse, then you will get the answer. Okay, so 34.3 is what you are getting, 34.3 degrees. Okay, so 34.3 degrees is actually the value at which it is stable. Yes, 34.29. Okay, that value is what actually you have to do. So first of all, calculate this value using calculator, 1 by 9 times of 0.35, then take a square root of that and then click sin inverse. Okay, when you are clicking sin inverse, make sure the blue dot is in degrees. Okay, because in the question they have asked the answer in degrees. Here, so nothing is coming. No, this is also not coming. Fine. Okay, anyhow, let us see this. Okay, so this is how basically it's a simple practical type of question. Okay, normally what happens if you suspend any low density material, then what happens, the material will come to equilibrium at some angle, correct? So we found that angle, that's it. Okay, so it completely depends upon the length of the beam, because the cross section is getting cancelled all over, so it depends on the length of the beam. So this 9 is basically the length of the beam is what we need, so sin theta. So if you find, then theta is actually the angle at which this block comes to equilibrium. So this block is coming to equilibrium at some angle which is 30 something, 34.3 degrees. Okay, so 34.3 degrees is the equilibrium angle of this block. No, actually the Google account got changed. Okay, so that's why in recent search we cannot find that, because the other day I was taking class with some other Google account, today it is some other account. Okay, so that's why in the history it won't be there. Fine. Anyhow, so anyhow I can easily show this. I'll tell you the sequence. First of all, calculate this value, then take a square root, then click sin inverse. Okay, then you will get this value, 34.29 something, whatever you are telling. Okay, so next question, let us see this question. This center of balance is common question. Okay, this work done again, some common questions. This question we have already done in the class. Now this question, so let us see, water enters the bottom of the cone in the figure at a uniformly increasing average velocity v is equal to kt. So as time is increasing, this velocity is also increasing, v is equal to kt. If d is very small, so basically if this is small d, this is small d actually. Okay, so if this diameter d is very small, derive an analytic formula for the water surface rise h of t for the condition initially there is no height at t equal to 0. So initially there is no fluid actually. Assume incompressible flow, of course. Okay, so incompressible flows. Now if you see carefully, they are telling you what's happening. Basically there is some fluid jet that is being injected here. Okay, so now the velocity of the flow is actually increasing with time, so velocity is equal to kt. Okay, so velocity of the flow is increasing with time. Then what happens, the water height in the cone will slowly starts increasing, correct? So the water height in the cone will slowly start increasing. Now they are asking you what is the function of h with time actually. Okay, so let us see. First of all, if you choose this as a control volume, if you choose this cone as a control volume, because this is the location in which water height change is occurring. Okay, so from here let us say sorry, excuse me. Now if you take this as a control volume, so let us suppose if you neglect this small thickness height. Okay, so this h of t, height of the cone, and this is also height of the cone. So let us suppose this small height if you are neglecting. Okay, now if you see, if you take this as your control volume, if you take this as your control volume, okay, now let us see, one thing is very clear, from continuity, mass flow rate that is flowing into the control volume minus mass flow rate that is flowing out of the control volume is equal to rate of change of mass inside the control volume.
correct? Yes or no? Yes or no? So please tell me. Basically, so I solved this problem in previous Abhyas says yes. I think I've solved. So because this is a good question, so I thought of revising actually. Okay. So now if you see, so why is it wrong if you just do force balance between FB and W? FB and W cannot keep the beam in equilibrium together. Okay. Sigma Fy can be 0, but moments can actually rotate the beam. Okay. Look, for example, let us suppose if you have like this. Let us suppose if you have this forces like this. Okay. Let us suppose like this. Then in such cases, or basically something like, let us suppose you have a beam like this. This is center. So let us suppose you have two forces like this. Okay. Or two forces like this. Now basically what happens? Because of these two forces, let us suppose if both the forces can be F. Okay. Sigma Fy is equal to 0. Definitely. But sigma moment acting about this point O is not 0. Okay. So and rotation depends upon moment rather than basically the force balance. Okay. So that's why we have to equate moments whenever you are trying to put some restriction on the rotation of the objects. Clear? Yes, Ganesh, many of you might have done this sigma Fy equal to 0, but you might have got the wrong answer because the reason is this: rotation depends due to moment acting, okay, not the force directly. Fine, let us see this question. So m dot in minus m dot out is equal to rate of change of mass inside the control volume. Now if you see this control volume, into this control volume there is only mass inlet, there is no mass outlet anywhere. Okay, so that's why this mass outlet term is actually 0. Now what is the mass inlet? Density into area. Area is actually, if you see, this is a small diameter d, so pi by 4 d square is the area which is perpendicular to the flow direction. Yes or no? Correct? So basically if you see, this is having a small diameter d, so if this is having a small diameter d, then in that case the cross sectional area perpendicular to the flow is pi by 4 small d square. Okay, so pi by 4 d square into velocity. Okay, so what is velocity at any given time? Kt is the velocity of the flow. Okay, they have given v is equal to kt, so kt is the velocity of the flow. So this is equal to d by dt times of mass inside the control volume. So if you neglect this small volume, actually if you take this as a complete cone, if d is very small, then d by 2 will be much smaller. Okay, so let us suppose if you assume this as the complete cone, basically then what happens? 1/3 pi r square h, 1/3 pi r square h, where r is the radius at any given time, r is the radius at any given time, and height is height of the fluid level at any given time. Okay, so 1/3 pi r square h into density. So this is mass inside the control volume. Okay, so because d is very small, it's like almost reached the ending of the cone, so that's why we can approximate the total volume of the fluid inside is nothing but volume of that conical shape. Okay, now if you see, this density is constant anyhow, incompressible flow, so density remains constant everywhere, and pi also gets cancelled. Now if you see, d square k or k d square by 4 times t into dt is equal to derivative of r square h by 3 is what you have. Okay, now what is the relation between height and radius? Basically you can take this angle theta. Okay, so if this is r and this is h at any given time, so tan theta is equal to r by h, correct? So tan theta is equal to r by h basically. So r can be written as h times of tan theta because your main point of interest is h. Okay, so here can be written as h into tan theta. Okay, so this is what you have. Fine. Now if you see this, k d square by 4 into t dt is equal to 1 by 3 into derivative of r square h. So what is r square? H square tan square theta into h. Okay, so this is what you have. So this implies k times of d square, or 3 if you shift here, 3 by 4 times of k d square t dt is equal to, now derivative of tan square theta is constant, correct? Because the cone angle is constant, so tan square theta, if you shift to the left hand side, tan square theta comes into the denominator, so derivative of h cube. Okay, so derivative of h cube is going to be 3h square into dh, correct? So derivative of h cube is what you have, so differentiation of h cube is 3h square dh. So 3 gets cancelled basically here. So if you integrate this, okay, so basically we know what we have, k d square t by 4 tan square theta into dt is equal to h cube dh actually. Okay,
So h cube dh. Now try to tell me one thing. This is h cube h square dh na. This is 3 h cube, right? So 3 gets cancelled. How did I cancel 3? So tan square theta if I write here, derivative of h cube is 3 h square dh. Okay, so this is h square dh. H square dh. Okay, or better let us keep one thing here. Instead of doing this differentiation, because again we have to integrate once again, let us do one thing. Instead of writing this step, because again we can skip one integration actually. Okay, let us keep this like this. If you keep it like this, then k d square 3 k d square t by 4 tan square theta is into dt. Okay, into dt is equal to differentiation of h cube. Better let us keep this like this. Okay, because again why to differentiate and integrate once again. So if you see this now, our function, if you integrate this, okay, so if you integrate this, basically at time t is equal to 0, the height of the fluid level is also 0. At time t is equal to t, there is some height in the column. Okay, so h. Now if you do this integration, definite integration, this is constant 3 by 4 k d square by tan square theta into integration of t dt is t square by 2 if you substitute the limits. Okay, t square minus 0 square by 2. So this is equal to, here radius is also varying. Yes, radius is also varying, that's why we have written. Okay, as height changes, radius of the cone also changes na, that's why. Okay, so here we have the relation. Clear? Here basically if you see, as h changes, this r also changes. Okay, radius is changing. Now if you see, integration of differentiation gets cancelled, so h if you keep, h cube minus 0 cube. This is the direct value, because otherwise what I have to do, I have to differentiate and again integrate. So that's why I have directly done the integration. So integration of differentiation gets cancelled directly. Okay, so what is h cube basically? Now h cube is equal to 3 by 8 times of k d square t square by tan square theta. So what is h basically? Height at any given time is given by this expression 3 by 8 k d square t square by tan square theta whole power 1 by 3. Okay, so this is the expression that you can have for this case. Okay, so this is the expression for the calculation of height h at any given time. Okay, so k is constant, d is constant, you know, tan theta is constant. So if I give you time, you can calculate this height at any given point of time. Okay, now if you see this 3 by 8 times of, okay, in all the questions you have 3 by 8, here it is 5 by 8, so it is wrong. Now coefficient is 1 by, power is 1 by 3, but here power is 2 by 3, so this is also wrong. Then 3 by 8 k t square d square by tan square theta. So here it is multiplication of tan square theta, that is wrong. So by tan square theta can be written as cot square theta. So option A is correct answer. Okay, variation will be linear. No, it won't be linear variation. Okay, because as you increase the, look, when time increases, the volume is actually increasing. So the surface area, the cross sectional area of the cone keeps on increasing. So the height increase will keep on decrease actually. Okay, so basically if you see, initially for some time, for the small cross section, height starts filling fast, but as the fluid comes more into the cone, then definitely what happens, radius increases na. So when radius increases, this will actually increase. Okay, radius variation will be linear. No, radius need not be linearly varying. Okay, the ratio is actually same, but actually if you see the correct expression, because if you see at any given location for height h, if the radius is r and if this angle is theta, then this is the correct variation. Okay, radius need not increase linearly with height. Okay, it increases with respect to tan theta. Okay, because if you see, okay, in this case theta is constant. Okay, for the cone case theta is constant, so that's why, since this is constant, radius is equal to some constant times of h. Okay, so in this case since theta is constant, it can increase. Okay, clear? Because if you see, this is tan theta, theta is some fixed value in case of a cone. So since tan theta is actually fixed value, then this r is also increasing linearly with h, but in actual cases it need not take the place. If the container shape is something different, instead of cone, if it is something like paraboloid or something, then it can change actually. Okay, fine. So basically the correct answer is 3 by 8 times of k d square. This first option is actually the correct answer. Okay, so for this analysis that we have done here, did you understand why I did not differentiate? Because even after differentiating, once again I have to do integration. That's why I have directly applied integration here. Clear? Simple question based on mass continuity. Okay, fine. So let's go for the next question. Okay, all these are simple things. Then discharge velocity potential we have already solved. What is this question? The pipe is having 45 centimeters friction. I lost simple question.
Heavy fuel is this again simple question. So basically the value of constant C for which the flow is irrotational. This is also simple question, right? Basically what you have to do is you have to check curl of V bar is equal to 0. Okay, so please check anyhow. We'll do one mathematical question also like this. So let us see. Velocity is given, U is 2.85 plus 1.26 x minus 0.896 y. Okay, and velocity, y component of velocity is 3x plus cx minus 1.28 y. Okay, the value of constant C for which the flow is irrotational. So for the flow to be irrotational, curl V bar is equal to 0. So since it's a two-dimensional flow, the rotation is the kth component rotation. So basically curl half times of curl V, or curl V can be 0. Okay, rotation. Okay, so curl V is equal to 0. So this implies, so the rotation is, the flow is happening in the xy plane, so rotation will be about the z axis. Okay, so what is the rotation about z axis? Dou v by dou x minus dou u by dou y. This quantity should be 0. Okay, so what is dou v by dou x? 3 plus c minus dou u by dou y. Okay, so dou u by dou y is minus 0.896. This has to be 0. Okay, so what is c? Basically 0.896 minus 3. Okay, so this is actually 3. If you from 3 if you subtract this, then what you will get? 4 0 1 2 minus 2.104. Correct? This is what you will get. Acha, it is plus, na? Minus of minus, fine. If this is plus, then this is minus of minus is plus, so minus 3.896. Correct. Okay, so this is correct. This is meters per second, this is meters. Okay, so this is meters per second, this is meters, so this is 1 by second. Okay, so these are the units. So C is basically minus 3.896 1 by second is what you have here. Yes, minus 3.896. Correct answer. Okay, so minus 3.896 is the correct answer, because you know the curl has to be 0 for the velocity potential function. I mean this velocity to be irrotational field actually. Okay, so this is simple question, basically simple mathematical analysis. Then this question is just calculation of head loss, you know, friction. Then potential flow, this story we have told. Then what are the questions? Other questions. Okay, so let us solve one question from Reynolds transport theorem. Fine. So a liquid jet of velocity Vj and diameter dj strikes a fixed hollow cone in the figure, as shown in the figure, and deflects back as a conical sheet at the same velocity. So basically what's happening to the center of this? So could you please show the constant E in Navier could you please show the continuity equation and Navier-Stokes equation in polar coordinates? Okay, so I understood, fine, I'll show you. Okay, so let us solve this question. After that I'll show you. A liquid jet of velocity Vj and diameter dj strikes a fixed hollow cone is shown in the figure and deflects back as a conical sheet at the same velocity. So basically there is a jet which is moving in this direction, and this jet is getting splashed out as a conical sheet. Okay, so basically this is going from center and it is splashed out and deflects back as a conical sheet of water. The cone angle theta for which the restraining force, so there is some force. Obviously what happens if the cone is coming and hitting like this, then definitely the water will apply some force on the cone in the positive x direction. Okay, so in this direction there will be some force exerted by the water jet on the cone. So to stop the movement of the cone, you have applied some force F in the reverse direction. Okay, now what they are asking you, what is the angle theta? So this angle theta, what is the cone angle theta? This semicone angle theta. Okay, so this angle is theta. So what is this angle theta? That's what they are asking you. If the force required to stop it is 3 by 2 times rho aj vj square. So first of all, tell me one thing here. They have asked magnitude, na? So if the cone angle, if the restraining force F is equal to 3 by 2 rho aj vj square. Okay, so here they have given only magnitude because force is actually applied in the negative direction. Okay, so if force is actually applied in the negative direction, you should get a minus sign, but they did not put minus sign, means they have given only magnitude. Fine. So let us also talk in terms of magnitude only. Magnitude of restraining force is nothing but magnitude of fluid jet on cone. Correct? Force acting on cone. This is equal to magnitude of force acting on fluid. So this is equal to momentum of the fluid in the x direction, because this force is completely in the x direction. All these things are in the x direction, minus m dot v at the inlet in the x direction. Okay, so magnitude of this quantity. So this is equal to, now mass flow rate of the inlet and outlet is same, because this is steady flow. Inside the cone water cannot stay, so whatever is the fluid that is entering, same fluid will actually come out. Okay, so
the m dot is same actually in both the cases. M dot times of V out. At the outlet, what is the velocity? At the outlet, if you see, at the outlet, the velocity is something like this. Okay, so let us suppose if this angle is theta, then definitely the horizontal, the angle made with the horizontal is again theta here. Okay, so if this angle is also theta, this angle is also theta. Okay, so if this angle is theta, then obviously this velocity is v cos theta in the x direction. Okay, but of course this is in the opposite sense, so minus v cos theta is the outlet velocity, minus m dot is anyhow same, so m dot into v in. So at the inlet, what is happening? The fluid jet is coming in at a velocity vj. Okay, if you call vj jet velocity, so vj. Okay, so this is vj, this is having exactly in the positive direction, so this is just vj, no changes in sign, so vj directly here. Okay, so this is what we have, minus vj. Now if you see vj here, jet velocity, so this is equal to modulus of m dot into vj into minus cos theta minus 1. So minus sign if you take out, 1 plus cos theta. So modulus of this negative value is positive, so m dot is how much? M dot is rho area of the jet into vz into this vj into 1 plus cos theta. So basically what is the restraining force? The magnitude of the restraining force is actually equal to rho aj vj square times 1 plus cos theta is the force that you have to apply on the cone to keep it stationary. Okay, now if you see, they have given you this restraining force is 3/2 times of, this is given as 3/2 times of density aj vj square. Okay, so this is what they have given you. So now if you cancel the things, aj rho vj square, rho aj vj square gets cancelled, so 1 plus cos theta is actually equal to 3/2. Okay, so this is 3/2, so cos theta is 1/2, so this implies theta is 60 degrees. Okay, so the cone is actually a 60 degrees cone, so that's why it can the restraining force is actually equal to 3/2 times of rho a square v square. Yes, 62 is correct. So if it was hemispherical, then how we would proceed? For hemispherical, the cross section at any given point is taken as pi/4 r square. Okay, and then we should have taken it from some trigonometry. Basically, in the previous case you are asking, I understand. So this is smaller, this is capital R, then this is the height difference basically. Then we will actually take from some angles actually like this. Okay, theta, and we will try to relate at this constant angles thetas. Okay, not here, sorry, here, this angle. Okay, so we will try to get the relation between the small r and capital R in terms of the small h. Okay, in case of hemispherical tanks. Now let us see. So basically theta is actually 60 degrees. Okay, so theta is 60 degrees is the cone angle. 60 degrees is the cone angle actually here. Okay, so I am taking momentum out in both up and down of cone, that's why answer is little bit different. Look here, basically if you see the restraining force, if you calculate sigma fy, okay, you will have some sigma fy also acting on the cone at this location, because the outlet is actually at some angle, but here the restraining force is applied in the x direction, so we are doing the force analysis only in the x direction. Clear? Okay, fine. So we are doing the force analysis only in the x direction in that case. Okay, clear? So if cone angle is theta, then the final velocity vector will make theta/2 with horizontal. No, actually see here, cone angle is measured basically with respect to the center. Okay, so if the fluid is entering and coming out at theta, okay, so see carefully, fluid is going like this and coming out at angle theta. Okay, that's why the total angle change of the fluid of the flow is actually theta here. Clear? Fluid is coming like this and taking an angle of turn by theta degrees. Okay, phi will cancel each other out, fy will cancel each other out. Yes, net fy will be 0. Okay, because for half portion of the fluid the jet will have some upward velocity, for half it has downward velocity. Okay, so if you divide this mass flow into two parts and if you do the analysis, you will get net force acting on the cone is actually 0 in the y direction. Okay, look, you take half of the mass in the upward direction and half of the mass in the downward direction, then if you apply this linear momentum equation, you will get 0. Okay, now someone has asked me for the Navier-Stokes equations in polar coordinates and continuity equation. So continuity is basically given by this. Continuity is given by dou by dou t plus divergence of rho v bar is actually equal to 0. Okay, now actually if you see, we generally deal incompressible flows in our fluid mechanics case for XC. So for incompressible flow,
we have divergence of V bar is equal to 0. So this implies in polar coordinates dou VR by dou R plus VR by R plus 1 by R times of dou V theta by dou theta plus dou Vz by dou Z is equal to 0. This is the continuity equation in polar coordinates. Okay, so basically in polar coordinates, this is the continuity equation that you can generally derive this. Normally, if you take this, normally for continuity analysis, if you take the some small step in cylinder, and if you perform mass flow analysis in all the directions, you will get this equation very easily. Okay, so this is continuity equation. And coming to Navier-Stokes, you have to write it in 3 directions. So basically, what is Navier-Stokes equation in vector form? Navier-Stokes equation is something like Navier-Stokes equation is something like body force vector minus pressure gradient plus mu into this del square operating on V is equal to rho times of dV by dt. So if you write it in radial direction, of course this is for incompressible flow. Okay, whatever is this Navier-Stokes equation I am writing, this is only for incompressible flow. Okay, for incompressible flow. So if you see, we need to write this in radial directions, radial direction, in radial direction. So rho into body force in the radial direction. Normally in radial directions we don't have any body forces, we have only in the z directions. But if you write rho x bar minus dou p by dou r plus mu into this del square Vr is what you write actually here. Del square Vr is equal to rho times of dVr by dt minus v theta square by r. This is the radial acceleration. Okay, so dVr by dt, and where d is again dou Vr by dou t actually. Okay, so dVr by dt is actually again this dou Vr by dou t plus Vr into dou Vr by dou r plus v theta by small r into dou dou Vr by dou theta plus dou Vz into dou Vr by dou z. Okay, so this is in the radial direction. Clear? So basically this is in the radial direction. Similarly, you can write in the theta and azimuthal directions also. Okay, so del square is having some equation in polar coordinates basically. So del square is equal to dou square by dou r square plus 1 by r into dou by dou r plus r square into dou square by dou theta square, not r square, sorry, 1 by r square. Okay, 1 by r square into dou square by dou theta square plus dou square by dou z square is what is the partial this del square operator. So similarly, you can write in theta direction and also in the z directions. Okay, so this is how we write the Navier-Stokes equations in polar coordinates, and of course the continuity equation in polar coordinates. Okay, so can you please solve the first question taking water jet as control volume? Which first question? This question, water jet. This question is what you are telling. Is this the question that you are talking about? Acha, time done. Okay. 5 minutes. Normally because we deal with incompressible flows. Okay, so that's why. Okay. Look, Prakash, what is your doubt? So direction down portion is fluid is also coming. Can we consider, just for confirm? I didn't get this. So x direction for down portion is also coming in the positive direction. Na? Look, normally in the cone case, look, I'll come back to this question. So see here, in the cone case, if you see, so basically in this cone question, where is this cone question? In this cone question, if you see, velocity coming will be in this direction, but if you resolve this x component and y component, look, like how this is in the negative direction, this is also in the negative direction. Okay, so that's why things do not change. Okay, fine. Did you understand? Both these velocities are towards in the x direction, in the negative x direction. That's why we have written for the total mass, the outlet velocity is minus v cos theta. Okay, clear? Did you understand, Prakash, why we have taken this y direction velocity will be in the downward direction, but x component will be in the same as this upward component. Okay, so can you please solve the first question taking jet as control volume? Yes, that I'll write. So we will always consider incompressible flow, incompressible while getting
continuity equation in polar coordinates. Normally we in actual fluid mechanics, in our cases, we deal with incompressible flows. Okay, actually the same equation, normally if you want to write the equation in for general flow, there is some different equation in which inside you will have the density terms. Okay, fine. So now if you see, actually if you want to write for the continuity, this compressible flow, then the equation will be something like this. For compressible flow, if you want to write this equation, dou by dou t plus dou by dou r of rho times of Vr plus rho Vr by small r plus 1 by r times of rho V theta by dou theta plus dou times of rho Vz by dou z is equal to 0. This is the actual continuity equation. Okay, now if the flow is not incompressible, then what happens? You cannot take out density as constant. Okay, so if you cannot take out density as constant, then all these density terms will be inside. Okay, if flow is compressible, if flow is incompressible, then this first term goes to 0. From all these terms you can take density out as constant, and if you can cancel, then that's how you get this equation. Okay, so these are basically the things. Clear? Okay, now let us see. Anyhow, someone has asked me one question. In the first question, why can't we take this fluid as the control volume? So this question, basically, if you see, there is a jet actually and the fluid is coming. Okay, so this is the control volume where you are actually having your fluid volume change. Okay, so that's why this is the control volume. You can analyze, and basically in this, okay, you can take this fixed plate also together in the control volume. I think Sandeep sir has taken that. You can actually take, because if you see, within that plate region, there is no change of any momentum of the fluid, so that will not keep any what do you say, that will not affect the analysis actually. Okay, so actually this can be taken as the control volume, the volume where the fluid is undergoing some momentum change. Okay, but normally if you take plate plus this also, there is no change. Okay, jet plus plate also you can take, no issue. So will they ask questions in polar coordinates in XC? Generally not much, but sometimes yes, they do ask. There are instances where they asked. Okay, they'll give you velocity profiles in polar coordinates, and they'll ask you what is the velocity potential function, this stream function, all these kind of things they can ask you if they want. Okay, clear? So for now we will end this session, because I think I have crossed the time already. So we have done some questions today, some nice questions actually. This potential flow or some control volume analysis, this Newton's law of viscosity, some good question. Then again on some buoyancy and flotation, some other nice question. Basically we have done this. So all these questions we have done. Clear? Navier-Stokes equation, I think Sandeep sir has done. Okay, viscous flows. Okay, I'll keep one question and I'll ask you for something called pressure gradient, things like that in next lecture. Okay, in tomorrow's class. Fine. Okay. Fine. Please send PDF send quickly in group. Yeah, I'll ask them to send as soon as possible. I used force balance where net force is equal to volume of jet plus weight of the plate. But actually volume of the jet could not actually give you the force. Okay, because there is some momentum change that is actually bringing out. So that's why this weight of the jet cannot actually give you the balancing force. Okay, Ankit, that's why you might not have got. Yes, of course you won't get the answer. Look, why, I'll tell you. Let us suppose if there is a cylinder like this, let us suppose if fluid jet is coming, then the force acting on this is not only this weight of the fluid, but due to this momentum. Okay, so that's why similarly whenever there is a beam and if fluid jet is striking this, here this is not only due to this volume of the fluid, but the momentum due to the fluid. Okay, so that's why you have got actually the wrong answer. Okay, so tomorrow please keep some problems on Navier-Stokes equation and covert and plane Poiseuille flow. Yeah, I'll keep that. Okay, so no issue. Basically internal viscous flows is what you want. Okay, I'll keep, no issue. Okay, fine. So is this clear to all of you? Okay, fine then. So I will display then the most important slide finally. Where is this? Okay, yeah, good. Okay, so fine, we will meet tomorrow again at 9 AM and we'll discuss some more questions on fluid mechanics. Then I'll discuss this Navier-Stokes equation questions, co-ed flow, and this parallel and series combinations. And maths is at 9 PM today. Okay, there is slight Abhyas series is only for 3 hours. So our maths class is at 9 PM today. Okay, not at 11 PM. So please join by 9 PM. So 9 PM to 12 PM is what we will take. Okay, so all of you once please type the timing of the maths class. What is the timing of the maths class today? What is the timing of the maths class today? So all of you please type in the chat box. Everyone.
Yeah, 9 p.m. Okay, so please do attend by 9 p.m. Okay, not 11 p.m. Sure. Thank you then. Okay, so we'll meet again at 9 p.m. for discussing engineering maths, and meanwhile tomorrow again we'll meet at 9 p.m. sorry 9 a.m. to start this fluid mechanics questions. Okay, I'll keep the questions from series and parallel flow, series and parallel pipes, and also I'll keep questions from Navier-Stokes equation, coed flow, basically internal flows. Okay, internal viscous flows. Fine then. Thank you. Okay, so thank you all. We'll meet tomorrow. Thank you. Sorry, we'll meet again in the night 9 p.m. to solve some questions. Okay. Yeah. Thank you all. Thank you. Take care. We'll meet again on next session. Okay. Thank you.